Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, hello. All right, then a warm welcome to everyone here. We are live from NL Sports Ground, Dahisar East, Mauka 365, Tussle Premier League 2023, edition 2, day 12 it is, match number 23 going on. Raging Bulls, they are up against Game Changers. So the toss went in favor of Raging Bulls captain. They have decided to put the runs on the board first. And this is gonna be a cracker of a contest. Both the teams are equally dangerous, and it's match number 23. So the team who is sitting at number 3 taking up against team who is sitting at number 6. Raging Bulls at 3, Game Changers at 6. Both the teams have played 5 games so far, and both the teams have won 3. And what a start Game Changers have here. Third over going on, 10 on board for 1 wicket. And it's Himanshu at the moment, who has struck in his very first over. Got the read of the danger batsman from Raging Bulls, Sandesh, without scoring a run. He went back to the hut, and he looked in a complete control, in a great rhythm. Himanshu running hard, steaming in. Watch out that. Excellent. Though the surface doesn't have much to offer for a pacer, but still, Himanshu, he has been exceptional with the new ball. And not for the first time that he has struck for his team. Himanshu, he has a knack of getting a wicket with the new ball, and he has done extremely well. 3 overs gone. It's 11 for 1. The hello. On the other end, hello, hello. Excellent shot. This is pickup shot right into the length of the batsman Dharmendra. He was quiet till now, but as soon as he sees the ball in his slot, he has clubbed it over mid-wicket region for a big six. Boy, there was some connection.
and it has really gone out of here, out of the park. So maximum of the very first ball. Hello, hello. And the bowler responded well, though it was a bit on the pad of the batsman. He failed to get the ball on the bat. An appeal was there, but it was really going down the leg, denies the appeal by an umpire. Once again, he was looking to go over the mid-wicket fence. Change in pace, good variation, good skill by the bowler. He knows that the batsmen are looking to take him on, and he need to be smart. So this is a good comeback from Sairaj after going for a maximum of the very first ball. Came back brilliantly, bowling two balls, two dot balls on the trot. Devashish and Dharmendra, the D factor, are out in the middle for Raging Bulls. And both the batsmen love to play shots. They love to take on the bowler. Lovely delivery. And Sairaj Mistry, he has done a great job for his team right from the game one. The key in his bowling that he doesn't look to bowl with a great pace. Excellent. He relies on his length and line, and he has the ability to swing the ball, and that's what he is at. He is good at. A superb delivery to finish off the over, in spite of conceding a maximum of the first over, first ball. He ended up giving 7 in that over. 4 overs gone. It's 18 for 1. तो 4 ओवर का खेल हो चुका है पूरा. स्कोर है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर.
बहुत ही बढ़िया मुकाबला होने वाला है ये। अगर गेम चेंजर्स ये मुकाबला जीतेगा तो सीधे तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और खराब गेंद, खराब शुरुआत यहाँ पर डैनी द्वारा। फुल टॉस की ये गेंद धर्मेंद्र के लिए, और ये बहुत ही बढ़िया कनेक्शन गेंद और बल्ले का। मिड विकेट के क्षेत्र से 6 रन बटोरते हुए। बहुत कम देखा गया है कि डैनी अपने लाइन और लेंथ से चूकते हैं। बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं पहली गेंद फेंक रहे थे, और जहां प्रतीत होता है कि वार्म अप की कमी नजर आती हुई गेंदबाजी में। और जैसे जिस प्रकार के गेंदबाज हैं डैनी, उम्मीद आप यही लगा सकते हैं कि ये कमबैक बहुत बढ़िया करेंगे। बहुत ही कंजूस गेंदबाज हैं डैनी। ये लेंथ में परिवर्तन जरूर किया था, लेंथ बढ़िया थी लेकिन लाइन लेग स्टंप के काफी बाहर। भाग्यशाली रहे कि गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं हुआ, वरना कोई भी खिलाड़ी फाइन लेग के क्षेत्र में था नहीं, और गल्ले या बल्ले या ग्लव्स का संपर्क होता तो गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाती। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। एक बार फिर गेंद लेग स्टंप की तरफ से जा रही थी, बल्ले के बीचों बीच ना आई, इनसाइड एज गया। विकेट कीपर ने बढ़िया प्रयास किया, गेंद को रोका, लेकिन रोक नहीं पाए बल्लेबाज को 1 रन लेने से। तो धर्मेंद्र शुरुआत थोड़ा धीमा था उनका, लेकिन अब जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रतीत होता है कि अपना लय पा चुके हैं वो। बढ़िया गेंद हल्की सी रुक कर आई। जिस लिंक पर गेंद पड़ी थी, अगर उसी गति से अगर आती तो बल्लेबाज ने जो सोचा था वो बढ़िया सही सोचा था। शॉट सिलेक्शन बढ़िया था, उसे खेलने का प्रयास था, पुल करना चाहते थे ऑन साइड में। लेकिन क्योंकि विकेट में दोहरी उछाल भी है और दोहरी गति से भी गेंद आती है। गेंद स्लॉट में, लेकिन टाइमिंग बढ़िया नहीं। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां पर तैनात। साइराज मात्र 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज को। तो हम विकेट की बात करते हैं, ये उस प्रकार की विकेट नहीं है कि आप पहले गेंद से अपना शॉट खेल सकें। आपको समय देना होगा अपने आप को। और जैसे जैसे धूप और तेज होती जाएगी, विकेट थोड़ा हार्ड होते जाएगा, बल्लेबाजी के लिए थोड़ा अनुकूल होता जाएगा। 5वां ओवर गतिमान है। स्कोर है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मौका 365 टसल प्रीमियर लीग 2023 में। मैं सुनील रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभिनंदन है सभी हमारे व्यूवर्स का जो हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं एनएल स्पोर्ट्स ग्राउंड के इस खूबसूरत से मैदान में। धन्यवाद करना चाहेंगे हम हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, टीएमएस हॉलीडेज या फिर ड्रिंक्स ब्रेक के स्पॉन्सर एनर्जॉल। तो 5 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। स्कोर है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब अब अगले 5 ओवर जो हैं वो फेंके जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज एंड से।
छोर बदल लिए गए हैं लेकिन गेंदबाज वही है, साईराज अपना तीसरा ओवर फेंकते हुए। और ये सफलता, काफी समय से प्रयास कर रहे थे धर्मेंद्र साईराज के खिलाफ रन बटोरने का, और बहुत ही बढ़िया गति परिवर्तन, चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पर साईराज द्वारा। गति में परिवर्तन किया था, उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर, और धर्मेंद्र का बल्ला बहुत पहले ही चल चुका था, और नतीजा ये कि गेंद सीधे गिल्लियों पर टकराई, विकेट का पतन। शुरुआत मिली जरूर थी धर्मेंद्र को, लेकिन निराश होंगे कि उस शुरुआत को एक बढ़िया पारी, एक बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। तो अब बल्लेबाजी करने आए हैं तेजस, और पहली गेंद थोड़ी अपीच जरूर खेली थी, लेकिन कवर के खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात, कवर भी नहीं, मैं एक स्वीपर कवर कवर कह सकते हैं, और जो कि लॉन्ग ऑफ और उनके बीच जो फासला है वो बहुत ज्यादा फासला नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज छोर से जब गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाज को एक मौका होता है रन बटोरने का। एक कारण ये है कि डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड, जी हाँ, बाउंड्रीज जो है उस साइड छोटी है, और ये एक कारण होता है कि बल्लेबाज अपना चांस जरूर लेते हैं। और ये देखिए, जैसे ही हम बात कर रहे थे डायमेंशन ऑफ द विकेट ऑफ द ग्राउंड, गेंद पाले में बल्लेबाज के, और बेहतरीन कलाइयों का बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और अब देवाशीष का क्रीज पर टिके रहना बहुत ही जरूरी रेजिंग बुल्स के लिए। बढ़िया गेंद, तारीफ करनी होगी सायराज की भी, क्योंकि नए गेंद से ये गेंदबाजी करते हैं और इनका काम है कि गेंद को घुमाना, गेंद की घुमावट से बल्लेबाज को परेशान करना, और काबिलियत है इनके अंदर, दोनों तरफ गेंद को घुमा सकते हैं। और यही एक कारण की है कि अभी भी कप्तान ने इन्हें गेंदबाजी का भार संभालने दिया है। तीसरा ओवर कर रहे हैं अपना। फुलर लेंथ की ये गेंद है, और ये मिसफील्ड, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। कप्तान खुद वहां पर शरीफ, जहां मात्र 1 रन होने चाहिए थे वहां मिले हैं 4 रन, और 6 ओवर के बाद अब स्कोर है 39 रन, 39, 2 विकेट के नुकसान पर। हम देवाशीष की बात कर रहे थे कि क्यों इनका विकेट पे टिके रहना जरूरी है रेजिंग बुल्स के लिए। तो इनके अंदर वो क्षमता है कि अच्छे से अच्छे गेंदबाज के खिलाफ बड़े रन बटोर सकते हैं, और जब तक ये क्रीज पर रहेंगे गेंदबाज और विरोधी कप्तान सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। उस प्रकार के खिलाड़ी हैं ये, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े सिक्सर लगाने के लिए जाने जाते हैं। और
क्योंकि अब टीम हेलो, तो चलिए 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। गेंदबाजी के लिए आए हैं डैनी। पहला ओवर बहुत अच्छा नहीं था इनके लिए, 10 रन आए थे उस ओवर में, लेकिन अब दूसरे ओवर की बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है डॉट गेंद से शुरुआत करते हुए। अटकी हुई ये गेंद मात्र इसे दिशा दे दिया है। थर्ड मैन के खिलाड़ी 30 गज के दायरे में थे और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया बल्लेबाजी बल्लेबाज द्वारा, स्मार्ट क्रिकेट। बहुत ज्यादा गति नहीं थी इस गेंद में, लेकिन प्लेसमेंट बहुत बढ़िया, टाइमिंग बहुत बढ़िया, और अपना पहला बाउंड्री बटोरते हुए तेजस। ये बढ़िया गेंद, टप्पा गिरने के बाद रुककर भी आई और उछाल भी प्राप्त हुआ यहाँ पर डैनी को, और बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी किया तेजस ने भी। आखिरी समय तक नजरें बनाए रखी गेंद पर और उसे मात्र सॉफ्ट हैंड से ऑन साइड में टक किया था। तो अब तक जिस प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं डैनी, उस प्रकार से गेंदबाजी हुई नहीं इनके द्वारा आज। बहुत ही बढ़िया यॉर्कर है इनके पास, मनचाहा यॉर्कर, मनचाहा ब्लॉक होल में गेंदबाजी कर सकते हैं ये उस प्रकार के गेंदबाज है। अगर इन्हें कहिए कि आप 6 के 6 ब्लॉक होल में गेंदबाजी करिए तो ये खरे उतरते हैं उस इम्तिहान पे। लेकिन आज इनकी गेंदबाजी के अगर एनालिसिस एनालिसिस की बात करें तो थोड़ी सी शॉर्टर ऑफ लेंथ गेंदबाजी किए हैं, और ये फुलर लेंथ की गेंद बहुत ही बढ़िया इसे ड्राइव कर दिया है। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी डीप में तैनात, हल्की सी मिस फील्ड उनके द्वारा, और बल्लेबाज आसानी से 2 रन पूरे कर लेंगे। बढ़िया गेंद, और इसे रक्षात्मक तरीके से खेला था। खेलते ही भागना चाहते थे, चोर बदलना चाहते थे, लेकिन उनके पार्टनर ने नकारा। सही निर्णय। 7 ओवर का खेल पूरा, स्कोर है 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। So the change in bowling, Junaid has been brought into the attack, and it starts off conceding an extra miles outside the off. Outside the off, once again steering it to the third man. So talking about the field placement, if you see 5 fielder protecting the offside, 4 on the onside,
And now this is gonna be a tricky phase for both the teams. The middle overs, 7 to 15, and it will be interesting how the batsman pays their inning from here on. He wasn't in a complete control of that shot inside edge, and the ball will race away to the fence. Square leg fielder was inside the circle. He gives a chase but fails. So a mistimed shot on the onside, but it doesn't matter. They will all count, and for crucial runs. With that boundary, it's 50 up for the Raging Bulls, 52 for 2, 7.3 overs. Junaid, who bowls with an open arm action. So he doesn't bowl with a lot of bounce, doesn't get a lot of bounce from the surface. He loves to take the ball away from the right-hander. Top edge, and the third man, he has made a mess of it. Initially, he was looking to go for the catch, and then he decided going against it. Misjudged it completely, and a boundary for Devashish. That's the uneven bounce we were talking about. Every now and then you will get to see the ball rising up and the lack of bounce at the same time. So the batsmen have to be very watchful, very careful. And exactly what Devashish and Tejas are doing, just tapping on the length where the ball pitched. It was gone. It's 56 for 2. So a spinner has been introduced. Jatin Shah is into the attack. Right arm off spin and starts off bowling a wide ball, a fuller length delivery outside the tram line, and wicket keeper Imtiaz couldn't collect it. Ball goes on the offside, and both the batsmen were quick enough to get one. So the 2 runs will be added to the tally. Same line, same length, and same result. A finger spinner, Jatin Shah, a tall guy, but at the moment he is not getting a purchase from the turf. That came in sharply. That was the one delivery that he was looking to bowl from the ball one, and eventually delivering a beauty there. A floated delivery to the right hander, and he goes up and over. Extra cover. Excellent looking shot. Targeting the shorter boundary,
and putting the pressure on the spinner. The second maximum for Devashish, and this partnership, it's looking good at the moment. 37 of just 18 balls, 65 for 2, 8.2 overs. Devashish on 32 of 25 balls. After a maximum, one did expect from the spinner to shorten his length, exactly what he did, but the line wasn't good. Slanting down the leg, and Imtiaz, the wicket keeper, does the rest. Bowled way slower. And the nature of the surface helping the bowler here. Ball gripping it and stopping a bit. But kudos to the batsman for playing it late, playing with the soft hand, and good call from the non-striker. Scampering for one. Lovely delivery. So every now and then, Jatin, he is bowling a beauty, but he needs to be consistent. Shorter. And the batsman cuts away hard, and that will fetch him a boundary. Fielder in the deep ran hard, did well to get to the ball, but couldn't stop batsman to take 4 runs. This is turning out to be a good over for Raging Bulls, an expensive over so far. One ball yet to be bowled, 15 already in this over. Last ball of the over. This is sensible batting from Tejas, punishing the bad balls and taking a good single of good deliveries. 16 came in that over, 9 overs gone, 72 for 2. Hello. Junaid, the medium pacer, will continue. Bowls a half volley delivery to the right-hander, and he has on driven to the long on to get a single. Another extra. Shuffles across the beat. Ball is in the air. Fielder underneath it, and he has dropped it. He has dropped a seater.
And a direct hit at the non-striker's end. Ball ricochets and the batsman gets a couple of runs. They have given a life to the danger batsman here. How costly that catch will prove. Once again, it looked like he mistimed it, but even a mistimed shot are going over the fence. That's the power of the batsman for you. This is brilliant batting from Raging Bulls batsman Devashish. He has really paced his innings so well. Started off slowly, but when once he started playing his shots, he's looking unstoppable. And with that maximum, it's a 50-run partnership between these two. 55 of just 25 balls. Excellent partnership, and Raging Bulls, they really needed this desperately. After 6 overs, they were just 35 for 2. Between two fielder, third man and point. They will just see the ball going away the ropes. Another big over. This is turning out to be 2 balls yet to be bowled. On the pads. And it's just a flick of the wrist on the onside. It's a maximum, and what a way to bring up a half century. 51 of just 30 balls, 5 boundaries, 4 maximum. There she is. He is. Hello. And a solid forward defense. He's happy to block it. 10 was gone. It's 93 on the board for 2. And it's time for an Azol drinks break. A much needed one for everyone, in fact, here. It's scorching heat here at NL Sports Ground.
So the change in bowling, captain himself brought into the attack. Sharif it is, and he will be hoping to get a much needed breakthrough. Game changes. बहुत ही खतरनाक पार्टनरशिप यहाँ पर देवाशीष और तेजस के बीच। 65 रन जोड़ दिए हैं महज 28 गेंदों में। बढ़िया गेंद जरूर थी, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुए वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। 94 रन हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं शरीफ, बहुत ही चतुर गेंदबाज हैं। और देखना होगा कि इनका स्पेल किस प्रकार का रहता है। जैसे ही लेंथ को देखा, हल्की सी शॉर्टर लेंथ है, और क्योंकि फाइनल के खिलाड़ी थोड़े से वाइड है, स्कूप करने का प्रयास था बल्लेबाज द्वारा। घुटनों पे जाके इसे खेल दिया है, ऑन साइड में गेंद हवा में, और कैच पकड़ लिया गया है। जी हाँ, जैसे हमने पहले ही कहा कि ब्रेक थ्रू की जरूरत है, और कप्तान ने खुद अपने आप को गेंदबाजी के लिए लेकर आए और सफलता प्राप्त की। पहले ही ओवर में पार्टनरशिप तोड़ी है यहाँ पर तेजस। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले के ऊपरी भाग पर जाकर लगी थी, और यही एक कारण था कि गेंद हवा में जरूर बहुत जल्दी गई थी, वो डिस्टेंस प्राप्त नहीं हुआ। और बढ़िया कैच वहां पर डीप मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा। और अब कप्तान आए हैं रेसिंग बुल्स के। So it's the captain up against the captain. 3 wickets down, 94 for 3. 11th over in progress. And he is off the mark straight away. Rakesh Putran, a busy player. He loves to take on the bowler, and two of the best batsmen from the Raging Bulls are out in the middle. Devashish, 51 of 31. Full toss delivery, he just checked it short. Played it in the air, deliberately done by the batsman. And gets an easy couple of runs. So 5 fielders protecting the onside. Lovely delivery, and equally well played by Devashish. This is good contest between bat and ball.
Full toss one. And fortunate for the bowler that the batsman didn't send this out of park. Rakesh Putran, he wasn't happy with himself after playing that shot. He couldn't time it well. Ball goes into the cow corner region, gets a single. 11 gone, it's 99 for 3. And this time he didn't miss out. Another full toss offered to the batsman. And he has smashed it hard down the ground through the cover to get a boundary. With that boundary, it's 100 up for Raging Bulls. 103 in 11.1 overs. Another full toss, but this one was on the pads. And right from the meat of the bat, batsman plays it on the onside. Long on was in the business, gets a single. 3 more balls for the batsman Devashish. And it's a good, solid forward defense. 54 off 34. Last ball for him before he makes his way to the pavilion. He will go as a retired not-out batsman. Another full toss. And because the batsman, the mindset of the batsman was a bit defensive, he is happy with the single. So it's 35 balls for Devashish. 105 on the board for loss of 3 wicket. Excellent batting from the Raging Bulls captain. Short at delivery, cuts it through the point to get another boundary. So he's timing it well. He's finding the gap. Lovely bowled. And the batsman blocks it, plays it back to the bowler. 12 was gone, 109 for 3. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास
बल्लेबाज मकरन द्वारा। और शरीफ उस प्रकार के गेंदबाज नहीं है जिनके खिलाफ आप आसानी से रन बटोर सकें। बहुत ही बढ़िया परिवर्तन, बहुत ही बढ़िया लेंथ में अपने लाइन में परिवर्तन करते हैं। तो क्योंकि कलाइयों से गेंदबाजी करते हैं तो कलाइयों के सहारे ही गेंद को अंदर भी लाते हैं, गेंद को बाहर भी ले जाते हैं राइट हैंडर के लिए। पहली गेंद जो कि अंदर की तरफ आई और अगली गेंद जो बाहर की तरफ गई। बल्लेबाज मकरंद एक बार फिर ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। इस बार बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले का। साइराज वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी तैनात थे, आसानी से गेंद को रोका जा सकता था लेकिन एक हाथ से उस गेंद को फील्ड करने का प्रयास और ये एक और मिसफील्ड द्वारा बाउंड्री मिलती हुई। तो फील्डिंग के स्तर को थोड़ा यहां पर बढ़ाना होगा गेम चेंजर्स के खिलाड़ियों को। बहुत ही बढ़िया। हालांकि उस शॉट खेलने के बाद जो फ्लो होता है, फॉलो होता है, वो पूरा नहीं हुआ था। फुल टॉस की ये गेंद और इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी मात्र देखते रह जाएंगे, गेंद को सीमा रेखा के बाहर गई है गेंद 6 रन के लिए। कुछ इसी प्रकार की गेंद शरीफ के पहले पिछले ओवर में भी मिली थी बल्लेबाज राकेश के लिए और उस गेंद पर टाइमिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले का। बढ़िया बल्लेबाजी, अंत समय में अपने शॉट को अलोंग द कारपेट खेला। जिस प्रकार की फ्लाइटेड गेंद मिली थी उनकी, पहला इंप्रेशन तो यही था कि एक बार फिर हाथ खोलकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वह अच्छे बल्लेबाज की निशानी वही है कि अपने शॉट को एडजस्ट करें। 13 ओवर का खेल हो चुका है, पूरा स्कोर है 121 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 9.38 का रन रेट चल रहा है और इसी रन रेट से अगर बल्लेबाजी करते रहे तो रेजिंग बुल्स पहुंच जाएंगे 186। जी हाँ, ये प्रोजेक्टेड स्कोर है, लेकिन यहां से जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है रेजिंग बुल्स चाहेगा कि 200 के ऊपर का आंकड़ा छुआ जाए। फोरम आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। राइट आर्म ऑफ स्पिनर। शुरुआत तो बढ़िया की है, डॉट गेंद से शुरुआत हुई है इनके स्पेल की और अगली गेंद भी बढ़िया है। यहाँ पर गेंद तेजी से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में डैनी जो कि काफी वाइड खड़े थे, बढ़िया प्रयास उनके द्वारा पैरों से गेंद को रोकने का प्रयास, लेकिन असफल प्रयास। 4 रन मिलता हुआ राकेश को। बढ़िया गेंदबाजी और यही इसी प्रकार की गेंदबाजी करने की जरूरत भी है। आप पटकी हुई गेंद और ये गेंद चली गई है मिड विकेट के क्षेत्र में। बहुत ही बड़ा मैक्सिमम ये। तो स्पिनर्स के लिए हमने पहले भी कहा कि मार्जिन ऑफ एरर जो कि बहुत ही कम है
आप 4 गेंदे अच्छे भी फेंके लेकिन 2 गेंदे खराब और आपका पूरा ओवर खराब हो सकता है। एक बार फिर हार्ड हैंड से खेलने का प्रयास, संपर्क ठीक नहीं। इनसाइड एक छोटी बाउंड्री है, ऑन साइड में 4 रन मिल जाएंगे। बड़ा ओवर साबित होता हुआ ये 14 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में। फोरम द बर्थडे बॉय, उनके हाथ में है ये गेंद, चाहेंगे कि विरोधी कप्तान का विकेट प्राप्त किया जाए। आज इस शुभ अवसर पे उन्हें बहुत ही अभिनंदन, बधाई उनके जन्मदिन की। तो इस बर्थडे के अवसर पे, जन्मदिन के अवसर पे ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपको बहुत सारा सक्सेस, कामयाबी मिले, खुशियां मिले और आप तरक्की करते रहिए, चाहे वो ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। फोरम 14 ओवर का खेल हो चुका है पूरा, स्कोर है 135 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तो आखिरी 6 ओवर बाकी है यहाँ। गेंदबाजी के लिए आए हैं डैनी फुलटॉस, ये गेंद और यहां पर मिसफील्ड ऑन साइड में। मानो गेंद वहां पर फील्डर के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही हो। बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा, प्रयास बढ़िया था वहां पर थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा, लेकिन बेहतर एफर्ट की जरूरत थी। यहाँ इसके हमने पहले भी कहा कि ये फेस जो होता है 7 से 15 के बीच बहुत ही निर्णायक फेस होता है। बहुत बार देखा गया है कि जब भी फील्डिंग टीम ने शुरुआत अच्छी किए हैं, थोड़े कैरीड अवे हो जाते हैं और उसके बाद बल्लेबाजी टीम कमबैक करती है, और वही होता हुआ यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है रेजिंग बुल्स ने। जिस प्रकार की शुरुआत इन्हें मिली थी, 6 ओवर में मात्र 35 रन बने थे 2 विकेट के नुकसान पर, उसके बाद 8 ओवर में 100 रन से ज्यादा जोड़े हैं। जी हाँ, अगर अब स्टैट्स की भी बात करें तो पिछले 8.3 ओवर में 105 रन बनाए गए हैं और ये सफलता बहुत ही धीमी गति की ये गेंद थी। जिस गति की अपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज, उसके विपरीत गति से गेंद आई और स्टंप्स बिखर चुके हैं। विकेट का पतन हो चुका है, बल्लेबाज लौट कर जा रहे हैं पवेलियन की तरफ। मकरंद 13 रन बनाए उन्होंने 8 गेंदों का सामना करके। चौथे विकेट का पतन होता हुआ 14.4 ओवर के बाद स्कोर 143 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं वैभव परमार।
एक और धीमी गति की गेंद बैकफुट पे जाके इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है ऑफ साइड में। डीप कवर पे खिलाड़ी तैनात, एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए 144 रन। बढ़िया गेंद, अच्छा कंधों का इस्तेमाल किया और पटकी थी विकेट पे, पटक के उस गेंद को बल्लेबाज उसे जगह से ही मात्र गाइड करना चाहते थे पॉइंट और थर्ड बैन के क्षेत्र में। गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं। 15 ओवर के बाद स्कोर 144 रन। 9 ओवर आते हुए पिछले ओवर में एक सफलता प्राप्त होते हुआ है डैनी को, पहला सफलता उनके लिए। 144 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। आखिरी 5 ओवर फेंके जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज छोड़। अब देखना होगा आखिरी 5 ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं रेजिंग बुल्स, या फिर गेम चेंजर्स कम बैक करना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है रेजिंग बुल्स द्वारा वो आसानी से 190 या 200 रन का आंकड़ा छू सकते हैं। और यहाँ से अगर गेम चेंजर्स रेजिंग बुल्स को 180 के आसपास रोकने में कामयाब होता होगा तो ये एक जीत होगी उनके लिए। So now we are into the slog overs. And to bowl the 16th over, it's Himanshu, the strike bowler for game changers, is into the attack. Lovely delivery. He bowls with a decent pace here. He bowls with a good pace, in fact. That hurried the batsman on his pull shot on the onside. Can only get a glove. Ball goes on the onside, gets a single. This is going to be a good contest. Quality batsman up against a quality bowler. Good pace, but down the leg. So the packed offside field it is at the moment. And at the moment, bowler is bowling on the onside. He is not happy, and he shouldn't be. So the fielding is set on the offside. Probably is looking to bowl around the off stump, maybe fifth or sixth stump. And it was a good delivery. Batsman giving the respect to it, leaning forward, defending. क्यों अटक? There he goes on the pads and a pickup shot on the onside, clipping it. Excellent wrist work from batsman Rakesh. As we did mention, it wasn't a good line from the bowler. He has offside protected for him, but not a good delivery and not a good idea at all to bowl on the pads. Rakesh, he is very strong. With that boundary, it's 150 for Raging Bulls. Much better line and length
So six fielder protecting offside. A long off, sweeper cover. A cover and a point fielder are inside the circle. Third man and deep cover. Once again on the pads. Luckily, it didn't go in the gap. Straight to the fielder at short mid wicket. Dot ball to finish off the over. 16 gone. 151 for 4. And to bowl the last over of his spell, Sairaj is into the attack. But after some discussion, the captain has decided to change the bowler. Now Sairaj is going to the deep mid wicket to field. And it's the spinner who is into the attack. It's the birthday boy who is into the attack for him to bowl his second over. A quicker, a flatter delivery, but outside the off stump. Wide is the signal. Slower one in the air. Batsman goes deep in the crease. Hits it high on the bat. Back to the ball for no run. A quicker one this. And just a tap on the offside. And they take a single. Goes around the stick this time to the batsman. Rakesh, he backs away. Was looking to make some room for himself. Cut on the onside. Offside, in fact. So this is good thinking from the bowler to come around the sticks to bowl to the right-hander. Probably hoping to take the ball away from the right-hander. Bowl an angle delivery. He would be looking to bowl with the arm. And here he comes. The helicopter shot. The catch has been taken, but Danny was there at the long on, a tall guy. Big hands, safe hands. Well, he has taken a safe catch. But now it's up to the umpire. If the fielder has touched the boundary cushion with his foot is the question. Both the umpires are discussing amongst each other.
So the decision has been made. Rakesh walks back to the hut, and it's a birthday by Forum. He gets a big wicket off the opponent captain. He goes back to hurt after scoring 36 of just 21 balls. Pratik Wane is the new batsman at the crease. Good delivery, cuts it away, but finds the fielder at point. And the wicket of Rakesh was indeed a big wicket for game changers. His stay at the crease would have resulted in some big overs. Excellent over from Forum, conceding just a couple of runs and getting a big wicket. Game changers, they needed that kind of over to change the context of this game. It's 17 gone, 153 for 5. Last 3 overs to go. To bowl the 18th over, it's Sairaj. He was excellent with the new ball. It's time for him to perform, to deliver with an old ball, and the batsman advances down the track. But the lack of pace there from the bowler Sairaj. Slower delivery on the pads. Shout of LBW. Umpire says it's going down the leg. It's dot ball. And dot balls in the slog overs are a gold dust. This time was looking to cut away off the back foot. Pratik Mane. He's struggling to find the timing to time the ball here. How one can forget his inning. 12 off 2. It was a history. Going down the leg. They are appealing for an LBW. But the umpire has spotted it on. Nothing came from the part of the batsman. So wide will stay. Sairaj, he is setting up an example here with his action, with his line and length. He's so accurate. And equally, he is so clever as well. Bowling the 18th over, the last over of his spell, and he knows anything in the slot of the batsman, he will be punished. And he hasn't bowled a slot delivery in this over so far. So the length from him in this over has been almost at the good length or at the shorter length. So now it's up to the batsman to think and improvise and get a boundary. Off the back foot and played it on the rise.
Excellent placement, excellent timing. And this quick outfield. Will fetch him a boundary. A much needed one for Raging Bulls. It was turning out to be an excellent over so far. In spite of conceding boundary of the last ball, only 8 came in that over. End of a spell for Sairaj. He bowled 4 over, 1 made and 26 for 1. 18 overs gone. It's 161 for 5. Last 11 balls to be bowled. How far can Raging Bulls go from here on? 163 on the board, and finally, Pratik Mane breaks the shackle into his zone, and he has smoked it over the bowler's head for a maximum. Pratik Mane, he will be relieved, and now as soon as Forum gets punished for a maximum, he's switching in the end, coming around the wicket, and a misfield in the deep. So Forum, he is not getting a support from his fielder. This shouldn't have been a boundary, though it was traveling, and this should have been stopped. The fielding has been disappointing from game changers in this match. Once again, on his knees. And this time, the same fielder who misfielded redeems himself, runs to his left, and did exceedingly well to stop the batsman to only 1. Flighted delivery, and Webho finds the fielder at long on. Danny, he has got a safe hands. And Vaibhav Parwar, his stay at the crease has come to an end. And the batsman walking in is Devashish. He is ready. I beg your pardon, it's Janish Shah from Raging Bulls. So 174 on the board for loss of 6 wicket. At once, Raging Bulls, they were looking to go anything about 200, but game changers, they have pulled the things back after getting a wicket, especially the wicket of the Raging Bulls captain Rakesh. Right arm around to the left-hander. And the ball is turning away from him. Ask a question to the umpire. Umpire obliged. Signals the wide. Flighted delivery. And ball meets the stump. So the left-hander comes and he goes. 175 for 7 after 19.
Himanshu to bowl the last over of this inning. $176. Last 5 balls. And it's Devashish who is at the crease to resume his inning. 55 of 35. Can he take his team to anything above 190? Here goes Ariel, but mistimes it completely. Hits high on the bat, only to get one. Himanshu, the only bowler from Game Changers who has bowled less than 6 in an over. That sums up how well he has bowled in this match, and that would be a plumb. Pratik Mane, he is not a happy batsman. Walking back to the hut, shuffling across, was looking to play it on the onside. It was a full toss delivery, struck on the pad. Umpire has his finger up in a flash. A good hand from Pratik Mane, 15 of just 12 balls. 177 on the board, and Game Changers, they would be happy to restrict Raging Bulls anything less than 185. As we did mention earlier, at once they were looking to post 210 or 15. And it's a dot ball. New batsman is Nitesh Panchal. So this is the last over. Another dot ball. No, it's a white ball. Hello, hello. And the last ball of the inning, and Devashish, he has faced only a single ball in this over. He would be wanting to come at the strike, and he has got the strike back. Last ball of the inning, 179 on the board. A maximum will take Raging Bulls to 185. And he has cleared the ropes. It was a change in a pace, but it doesn't matter to the batsman. Devashish, he was
All right then. So the chase begins. 186 to chase down of 120 balls. And this is shaping up to be a thriller of a contest, as we did promised earlier. Two quality teams up against each other. Raging Bulls winning the toss, batting first, posting a good total on the board. And it's game changers, openers, Imtiaz and Pradeep Dubey. They have a role to play here. They will have to set the tone up right away. Pratik Mane with a new ball in his hand. Let's play is the call from the umpire. And a play enemy straight away. Out swinging delivery, beating the outside edge of the batsman, Imtiaz, who just came forward to play it through the offside. No connection between bat and ball. So a slip in place, a point cover, mid off. Outside the off stump and extension of an arm from the umpire. So only two fielders outside the circle. A deep mid wicket and the third man, who is very wideish. Lovely delivery. Pradeep Mane, he is an excellent performer for Raging Bulls. And not only with the ball, with the bat as well, he has done job for his team. A good delivery and Imtiaz happy to block it. So talking about Imtiaz Sheikh from Game Changers, he's in a good form. In last couple of games, he has got some good runs against his name, and he would be looking to continue the form that he's in. Banged in shot, cuts away on the offside, and it's a direct hit, and it would have been a goner. Pradeep would have been a goner here. Excellent fielding effort from Sandesh there. He was at backward point, charged into the ball quickly. He had only a one stump to aim at. If there was a direct hit, Pradeep, he wasn't even a frame. Nevertheless, it's a single for the batsman Imtiaz. He is off the mark. He's at the non-striker's end now. It's 2 for none. Fuller length delivery, and it's a catch practice for the fielder at cover. Pratik Mane striking in his very first over, and Pradeep Dubey is gone back to pavilion without troubling a scorer. It's 2 for 1.
This is excellent start for Raging Bulls and the batsman at number 3 walking in for game changers. It's a giant. Another hitting the deck hard at the moment. The batsman just played it defensively. And of an excellent first over from Pratik Mane. 2 for 1. Imtiaz and Jayan. Talking about Jayan particularly, one of the only 2 batter in this TPL to have a century against name. How one can forget that inning from him. One of the best you can ever watch in a T20 format. Nitesh Panchal to pull the second over. Fuller length delivery, driven down the ground, will get a boundary. A good looking shot from a good looking batsman, Imtiaz, getting his first boundary. Once again, deliberately played in the air and goes over the fence as well. This is clever batting, clever thinking from Imtiaz. All the fielders on the offside were inside the circle. And he just cleared them easily and also cleared the ropes as well. To back boundaries, putting the pressure on the bowler. This one once again a touched fuller. Once again, batsman was looking to play it down the ground, inside edge of the bat, on the pad, and the ball goes on the offside. Fielder at the point fields it, returns the ball back to the bowler, and both the batsmen cross over for 1. This was on the pad, and Andre went to the long on, only to get 1. Nitish Panchal, the way he runs, the way he finishes, he must be inspired by the legend of this game, Glenn McGrath. The way his left hand opens up. There you go. Down the leg. And even the wicket keeper fumbles, he couldn't collect it. Fielder from fine leg gives it a chase, but only will get to fetch a boundary from over the ropes. 5 bonus runs, 5 runs.
added to the team's total of game changes. If the first over it belonged to Raging Bulls, so this belonged to game changers. 15 so far. Make it 16 and still one ball remaining of this over. This one was looking to play on the up with a minimal footwork. The dot ball to finish off the over. 2 overs gone. It's 18 for 1. बहुत ही बढ़िया गेंद प्रतीक माने द्वारा फुलर लेंथ की ये गेंद थी, लुभाया था बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे कवर के क्षेत्र में। This is a big wicket. Jayan, he goes back to pavilion cheaply. Excellent bowling effort, excellent thinking from Raging Bulls captain. Having a slip in a place. This was the third over. The ball was still moving and it's an excellent grab by himself. Gets a rid of a danger man, Jayan. He will be disappointed. The team needed him today. It's 18 for 2 for game changers. इनसाइड एज पैड पे जाके टकराई, रन आउट का मौका, नौ स्ट्राइकर्स एंड पर। थोड़ी तेज तर्रार थ्रो की जरूरत थी वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा, लेकिन भाग्यशाली रहे यहां पर बल्लेबाज अरबाज।
पहले गेंद का ही सामना कर रहे थे। फुल टॉस की ये गेंद थी, पैड पे जाके सीधे टकराई थी। इम्तियाज का कॉल था और अपने पार्टनर पर भरोसा रखा, अपने पार्टनर के कॉल पे भरोसा रखा, गेंद की तरफ देखे भी नहीं और दौड़ बैठे थे नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर। भाग्यशाली रहे एक बार फिर। पटकी हुई है गेंद, इसे खेल दिया है बैकफुट पे जाके, बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले का, लेकिन सैंडी वहां पर पॉइंट पे खिलाड़ी जो कि फील्ड कर रहे हैं बैकवर्ड पॉइंट पर। बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट के खिलाड़ी का जो पोजीशन होता है उसे दिया जाता है जो कि अपने टीम का सबसे बेहतरीन फील्डर हो। तो प्रतीत तो यही होता है कि सैंडी रेजिंग बुल्स के सबसे बढ़िया फील्डर इस समय फील्ड की पोजीशन पे फील्डिंग करते हुए। बढ़िया जंपर गेंद और बल्ले का, और छोटी बाउंड्री है वहां पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास मौका नहीं उस गेंद को रोकने का। 4 रन मिल जाएंगे अरबाज के बल्ले से, पहला बाउंड्री लगता हुआ। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Appeal from the bowler and the keeper as well, but it really came off the thigh pad of the batsman.
बढ़िया गेंद और उसे रक्षात्मक तरीके से खेला। और क्योंकि अब चौथा ओवर चल रहा है, धीरे धीरे गेंद अब पुराना होता जा रहा है। गेंद की घुमाव अब कम देखी जा रही है। ये कारण है कि अब स्लिप के हटा लिया गया है। कप्तान राकेश पुत्रन जो कि रेजिंग बुल्स के थे, अब तक फील्ड कर रहे थे स्लिप के पोजीशन पे। ये बढ़िया क्रिकेट, गेंद का इंतजार किया और आखिरी समय पर मात्र उसे दिशा दे दी है। थर्ड मैन के खिलाड़ी जो कि काफी फाइन खड़े थे, प्रयास किया उन्होंने गेंद को रोकने का, लेकिन बहुत ही तेज है ये आउटफील्ड। 4 रन मिल जाएंगे इम्तियाज को। बहुत ही चतुराई भरी बल्लेबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन बल्लेबाज द्वारा। तो 4 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत कम समय में ऐसा देखा गया है कि नए गेंद से ही एक ही गेंदबाज को 3 ओवर कराया जाता है T20 फॉर्मेट में। अमूमन ऐसा होता है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि तेज हवा बह रही है यहाँ पर इस खूबसूरत से मैदान में, और ये एक कारण हो सकता है कि कप्तान ने एक बार फिर गेंद सौंपी है प्रतीक माने को, जो कि अब तक 2 ओवर फेंके हैं। 2 ओवर में मात्र 8 रन खर्च करके 2 सफलता प्राप्त किए हैं। और ये पहली गेंद जड़ में गेंदबाजी करते हुए प्रतीक माने। और अब समय है गेम चेंजर्स के दोनों ही बल्लेबाजों को थोड़ा समय दें अपने आप को, और एक साझेदारी की जरूरत है उनके टीम को। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथ में। बैकफुट पे जाके इसे, जिस प्रकार से टेनिस खेला जाता है उसी प्रकार से शॉट को भी खेला था अरबाज ने। तो अब गेम चेंजर्स भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में रेजिंग बुल्स थी। उनके भी 2 विकेट जल्दी चले गए थे। बहुत ही बढ़िया शॉट, कोई भी मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास उस गेंद को रोकने का। बैकफुट पे जाके क्या बेहतरीन कट किया था वहां पर पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में। इस शॉट के लिए जाने जाते थे हमारे वीरेंद्र सहवाग। जब भी शॉट की बात होती है तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात जरूर होती है। इस शॉट को खेलने के लिए आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। और इम्तियाज जिस फॉर्म में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहेंगे कि इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करें। एक और पटकी हुई है गेंद, बहुत ही ज्यादा बाहर। बढ़िया प्रयास वहां पर विकेट कीपर ने किया था, लेकिन स्लिप के खिलाड़ी में गई वो गेंद। बहुत जरूरी हो जाता है बल्लेबाजों के लिए भी कि जब आप फॉर्म में हो
जब आपका बल्ला बोल रहा हो तो आप चाहते हैं कि हर एक पारी को बड़े पारी में तब्दील करे। और जब मैं फॉर्म की बात करता हूं तो मुंबई इंडियंस के या भारत के सूर्य कुमार की याद आती है। जिस फॉर्म में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनसे ही सीख लेनी चाहिए बहुत सारे बल्लेबाजों को भी, कि जब आपका बल्ला बोलता है, जब आप फॉर्म में हो, तो आपको हर एक मैच, हर एक अपॉर्चुनिटी को काउंट करना होगा। और वही एक कारण है, वो एक खिलाड़ी है कि आज अपने टीम को बहुत ही बढ़िया स्थिति में ला चुका है। और कुछ उसी बल्लेबाज से इंस्पायर होते हुए यहाँ पर गेम चेंजर्स के बल्लेबाज, आज जरूरत है एक मैच विनिंग नॉक खेलने की अपने टीम के लिए। गति परिवर्तन यहाँ पर बहुत पहले ही देख लिया था बल्लेबाज ने, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। इसे टैप किया था मात्र, लेकिन एक बार फिर सैंडी बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात। हेलो, रन लेने का कोई भी मौका नहीं। फ्लैट डिलीवरी थी, उछाल बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं की, बल्लेबाज ने बैकफुट पे जाके इसे पंच कर दिया था सीधे खिलाड़ी के हाथ में। रन लेने की कोई भी संभावना नहीं। 5 ओवर का खेल हो चुका है पूरा, स्कोर है 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर 2 आफ्टर 5। और अब गेंदबाजी करने आए हैं स्पिनर गेंदबाज चैतन्य। राइट आर्म ऑफ स्पिनर, पटकी हुई गेंद बैकफुट पे जाके इसे खेल दिया है। जैसे ही गेंद ने कवर के खिलाड़ी को बीट किया, उस गेंद पर 4 रन का छाप छपा हुआ था। दोनों ही बल्लेबाज अरबाज और इम्तियाज बहुत ही बढ़िया कार्य करते हुए अपनी टीम के लिए समझ बूझ से बल्लेबाजी करते हुए। ये बढ़िया गेंद, जैसे ही उस गेंद में हल्की सी फ्लाइट देखी, बल्लेबाज
थोड़े से लालच में आए थे, घुटनों पे जाके इसे स्लॉक स्वीप करने का प्रयास। भाग्यशाली रहे कि गेंद सीधे किल्लियों पे जाके नहीं टकराई। एक और प्ले एंड मिस। ये आंख मिचौली का खेल हो रहा है दोनों ही खिलाड़ियों, एक गेंदबाज और बल्लेबाजों द्वारा। भले ही इस ओवर में 4 एक बाउंड्री आई, लेकिन उसके बाद 3 डॉट भी आए हैं इस ओवर में। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद और सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। फाइनल के खिलाड़ी ने कोशिश जरूर की थी। और यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन। तो निर्णय अंपायर द्वारा 4 रन। फाइनल के क्षेत्र में गया था ये गेंद। दूसरा बाउंड्री इस ओवर से। फ्लाइटेड डिलीवरी, बाहरी किनारा, पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से, और नतीजा 4 रन। मौका जरूर बनाया था, लेकिन काफी दूर चली गई ये खिलाड़ी के सर के ऊपर से। भाग्य ने साथ नहीं दिया यहां पर गेंदबाज का। पिछले 2 गेंद में 2 बाउंड्रीज आई, लेकिन दोनों ही गेंद बल्ले का, एक बल्ले का अंदरूनी किनारा और दूसरा बल्ले का बाहरी किनारा, एक फाइन लेग के क्षेत्र में तो एक थर्ड मैन के क्षेत्र में। 6 ओवर के बाद अब स्कोर है गेम चेंजर्स का 48 रन 48, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी करने आए हैं जेनिश। बाएं हाथ के ऊंचे काठी के गेंदबाज हैं ये, बहुत ही बढ़िया स्पिनर है, बहुत सारे मुकाबले खेले हैं, बहुत अनुभव है इनके पास बतौर गेंदबाज। फ्लाइटेड गेंद सीधे पैड्स पर, और इसे खेल दिया है कलाइयों के सारे ऑन साइड में। मिड विकेट के खिलाड़ी वहां पर तैनात। खराब गेंद, और भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्ले से टकराई नहीं, वरना यकीनन ये 6 रन हो सकता था, क्योंकि बहुत ही छोटी बाउंड्री है वहां पर ऑन साइड में। बहुत ही जोर से बल्ला चलाया था अपना बल्लेबाज अरबाज ने। ये बढ़िया गेंद, हल्की सी शॉर्टर लेंथ ऑफ डिलीवरी थी, और इसे बल्लेबाज ने महज दिशा दी है ऑन साइड में, कलाइयों के सहारे मोड़ा था।
एक और दिशाहीन गेंदबाजी जैनिश द्वारा, नाखुश अपने आप से। अगेंस्ट द स्पिनर। या फिर अगर हम भारत के ही बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की बात कर ले, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि स्पिनर के खिलाफ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। तो अगेंस्ट द स्पिनर किस प्रकार बल्लेबाजी करनी चाहिए, तो आप इन खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को बारीकी से देखिए, करीबी से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखना होगा कि अंपायर का क्या निर्णय होता है। बल्लेबाज ने अंपायर को बताया कि ये बल्ले से लगती हुई है गेंद और 4 रन मिल जाएंगे। पहला बाउंड्री लगता हुआ मोहम्मद शरीफ के बल्ले से। तो काबिलियत तो पूरी है मोहम्मद शरीफ में कि अपने टीम को इस मझधार से निकाल पाए। इसके पहले भी इन्होंने ये कर दिखाया है, जब इनकी टीम एक समय था 78 रन 10 ओवर में मात्र और 4 विकेट गिर चुके थे, और तब आए थे ये बल्लेबाजी करने। लेकिन उस समय उस दिन उनके साथी थे जयन, जो कि एक यादगार पारी खेली थी अपने टीम के लिए और अर्धशतक लगाया था मोहम्मद शरीफ ने। उसी पारी की जरूरत है आज गेम चेंजर्स को। पटकी हुई है गेंद, बैकफुट पे जाके इसे खेल दिया है ऑफ साइड में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग डीप कवर के खिलाड़ी द्वारा, बहुत बड़ी बाउंड्री है ऑफ साइड में। मकरंद अपना पहला ओवर फेंकते हुए अब तक 9 रन आ चुके हैं इस ओवर से। 2 गेंदें अभी भी शेष। स्कोर हो चुका है 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इक्वेशन की अगर हम बात करें तो 115 रन अभी भी चाहिए 68 गेंदों में। और रिक्वायर्ड रेट पहली बार इस पारी में 10 के ऊपर जाता हुआ। फुल टॉस की ये गेंद, लो फुल टॉस थी ये और आसान नहीं होता। हालांकि ये लगता है जरूर कि फुल टॉस की ये गेंद थी, और क्रिकेट में बहुत से लोगों का मानना यही है कि जब भी आपको फुल टॉस मिले तो ये अपॉर्चुनिटी हो जाता है, मिल जाता है बल्लेबाज के पास। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लो फुल टॉस की गेंदें आसान बिल्कुल भी नहीं होती है बल्लेबाज के लिए खेलना। 9 ओवर के बाद स्कोर है 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 8 का रन रेट। चैतन्य तैयार अपना तीसरा ओवर फेंकने के लिए। अब तक 2 ओवर में 16 रन खर्च किए हैं और इस वाइड के बाद 17 रन हो जाएंगे। एक और फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पे, इसे ऑफ स्टंप की गेंद को लपेट के मारा है ऑन साइड में। और जब भी खिलाड़ी जब एकेडमी में जाता है एज अ बैट्समैन, कोच उन्हें एक लेसन सिखाते हैं। बढ़िया संपर्क इम्तियाज के द्वारा, बॉटम हैंड का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल। सैंडी जैसे तेज खिलाड़ी को भी कोई मौका नहीं उस गेंद को रोकने का।
और इस बार बैकफुट पे जाके खेल दिया है ऑन साइड में, लेकिन खिलाड़ी वहां पर डीप स्क्वायर लेग पे तैनात। तो 30 गेंदों का सामना किया है इम्तियाज ने, बनाए हैं 34 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद और उससे भी बढ़िया डिफेंस यहां पर बल्लेबाज द्वारा। बढ़िया क्रिकेट। एक और धीमी गति की गेंद बैकफुट पे जाके इसे खेल दिया और ये निश्चित ही 4 रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया संपर्क, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन गेंद और बल्ले का। 10 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। स्कोर है 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब समय हो चुका है एनर्जॉल ड्रिंक्स ब्रेक का। All right then. So the inning resumes after a stretch, after a timeout, a drinks break in fact. What a shot that was from Imtiaz. It went like a tracer bullet.
99 of 59 is the equation. Another tossed up delivery. Very slow in the air. Straight to the fielder at point. Imtiaz, he will be the key here for the game changers to chase it down. The flatter delivery, a quicker one down the leg. Wicket keeper did well to move to his left quickly. This one was an arm delivery. So arm delivery is the one that comes into the batter, and it also skids a bit, comes a bit quicker than the usual. Another one. And Janish, he is so good with that kind of delivery. He's using his height to a good effect here. This one was a flatter. And this is what experience does to you. Janish, an experienced campaigner, wearing his length, wearing his line, not letting the batsman predict him. So with that single, Imtiaz will have to go back to pavilion as a retired not-out batsman. He played 35 balls, scored 40 runs. And it's good for the Raging Bulls because he was really looking good. Though he can come to bat again at the later part of this inning. But the Raging Bulls will be happy to see the new batsman at the crease, and they know this wicket is not that easy for the batters who is new at the crease. And it will give time for their bowlers to contain and let the asking rate go up, which is 10.58 at the moment. A misfield at the point, direct hit. Even the direct hit wouldn't have mattered for the batsman. They are home safely. 11 was gone. It's 90 for 3. So talking about comparison, so even Raging Bulls, they weren't far ahead from the game changers at this stage. So Raging Bulls were 99 for 2 after 11. Game changers are 90 for 3 after 11. It's a wicket which will matter here. Full toss delivery, ball by Mauka. Straight to the fielder at cow corner region, only to get a single. Game changers, they need one of their batsmen to play a cameo here. Off the back foot, straight to the point, a misfield there. But the batsman didn't decide to run. Lovely delivery.
At once, it looked like Jatin he would really take on the bowler, but eventually adjusted his position and happy to block it. Just a tap on the offside, and an easy single on offer. With that single, Jatin opens his account. Played it with a soft hand on the onside, a vacant region. Fielders were in the deep. Bowler had to run to the ball to field it. Single taken, 11.4. It's 92 for 3. Beg pardon, it's 11.5, 93 for 3. Last ball of this over. Off the back foot. There was a width on offer for the batsman, but he couldn't capitalize on it. Only to play it to the point. No run there. 12 overs gone. 93 for 3. तो पिछले कुछ ओवर से अब बांध कर रखा है यहाँ पर बल्लेबाजों को। रेजिंग बुल्स के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है। एक रणनीति के तहत गेंदबाजी हो रही है। फ्लाइटेड डिलीवरी एक बार फिर, और ये डायरेक्ट हिट। जी बिल्कुल भी रन था ही नहीं वहां पर, मारते ही भाग चुके थे। कॉल सुने या नहीं सुने ये तो पता सिर्फ बल्लेबाज को ही हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ही कॉल खराब कॉल था। जतिन जो कि बहुत ही दमखम था उनके बल्लेबाजी में, बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, आज निराश किया है अपने समर्थकों को। रनआउट के रूप में लौट चुके हैं पवेलियन वापस, और 4 विकेट का पतन हो चुका है। 13वां ओवर जारी है और अब बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं इमरान। ये बढ़िया दृश्य और अच्छी खबर ये गेम चेंजर्स के लिए, उनके समर्थकों के लिए। अपील की जा रही है, ये बहुत ही तेज अपील की जा रही है। गेंदबाज काफी कॉन्फिडेंट, लेकिन विकेट कीपर शांत। कहीं ना कहीं ये एक रणनीति होती है गेंदबाजों द्वारा अंपायर पे दबाव डालने का। जब भी प्रयास गेंद होता है ऑन साइड के बाहर, सीधे फाइन लेके खिलाड़ी के हाथ में, लेकिन डेंजर एंड पे भाग रहे थे शरीफ, उनका ही कॉल था ये। जैसे ही देखा खिलाड़ी वहां पर थोड़े वीक आर्म और छोर बदल लिया है। बहुत ही बढ़िया गेंद, एक बार फिर ये आम गेंद फेंकी गई जेनिश द्वारा। अपने तीनों ही ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है जेनिश ने। तीसरा ओवर फेंक रहे हैं ये।
और ये गेंद किल्लियों पे जाकर टकराई। दबाव बढ़ता जा रहा था। आस्किंग रेट जो था, रिक्वायर्ड रन रेट जो था, वो बढ़ता जा रहा था और जरूरत भी बढ़ती जा रही थी बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का। उसी प्रयास में मोहम्मद शरीफ गए घुटनों पे, एक स्लॉक करने का प्रयास, लेकिन गेंद के लाइन में बिल्कुल भी नहीं थे, पूरी तरह से चूक गए थे और गेंद सीधे स्टंप्स पे जाकर टकराई। 5वें विकेट का पतन, 13 ओवर का खेल पूरा, 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर। Ninety of 41 is the equation here. Imran and Danny are the two batters in the middle for game changers, and both the batsmen are new. One run taken, and they are coming back for two, and will get two. Vaibhav Pama is the bowler. The required rate is climbing away, mounting up 13.20 at the moment, and game changers, they really need a mad inspiration to change the things for them. Half-tacker delivery, helping it on its way. Fine leg gives it a chase, and he has given up. It's a boundary for Imran. And game changers, they need many of those. Down the leg, down the leg. 100 already on the board. It's 103 for 5. And both the teams, I am sure, coming into this game would have done the homework, would have seen their sitting position at the table, and they would know the importance of net run rate. So no matter which team wins, which team loses, but both the teams have to keep the run rate in their mind. Net run rate is going to play a crucial role going ahead in this tournament. Another flatted delivery to the batsman. He pulls it, a half-hearted pull this from the batsman.
As soon as we are progressing ahead in this tournament, every team are fighting for the top 4 spot. Now every match is from here on gonna be a do and die for every team. They have to play each match as if they are playing their last. You have to be spot on in all the departments, be it your bowling, be it your batting, be it your fielding. You have to tick all these 3 boxes to get those winning points. Struck on the pad, and he has been given. Nitesh Panchal finally has a wicket under his name. It's 104 for 6. And the new batsman walking in is the birthday boy from the Game Changers Forum. Can he make this day a memorable one for him with the bat? 82 of 35. And he's driven it beautifully, but straight to the fielder at cover. "81 of 33 balls, a difficult task for the Game Changers. And the kind of attitude the Game Changers have played this tournament so far, one would hope that they would really keep fighting till the very end. Danny swings and Danny misses. Danny, the strong lad, even the missed time from him will go over the ropes. Is that kind of pinch hitter, but at the moment it's Nitesh Panchal who is winning this battle. He is making his balls do the talking at the moment, and batsman has no answer. 15 gone, it's 105 for 6. 81 required of 30 balls. 16.20 is the asking rate. How close
Game changers can go from here on. Change in end, change in bowler. Spinner is into the attack. Chaitanya to forearm. Played it upishly, but ball falling way short of the fielder at long on. Single taken of the very first ball. Floated delivery and Danny. He decided to cut loose. And as we did mention, the strong arm from him. It came from the meat of the bat. And the ball is disappeared in the sky. We did tell you, Game Changers is the team who doesn't let go the things without putting on a show. They will keep fighting and fighting and fighting till the very end of this inning. Take that. Is it an opportunity? Janish, the tall guy, did well to get to the delivery. The ball goes over the ropes. Beg your pardon, it's Sandy who was there. He did well to get close to that ball. It's back-to-back sixer for Danny here. 12 of 5. And the bowler overcorrecting his length, not going for the flighted delivery. A wild swing, a wild swing from Danny, and he misses. So before this over, they needed 16 in an over. They have got 13 so far. Last ball of the over. "13 in the over. Make it 19 in an over." It is not over until Danny is here. It's the statement. Game Changers, they are in the house. 62 of 24. Anything can happen. So the previous over, Game Changers, they needed 16 in every over. They have got 19. So they have got one big over. They need a couple of more.
Nitesh Panchal is into the attack. A quicker delivery down the leg. Wicketkeeper couldn't collect it cleanly. And game changers will get a couple of runs to their team's total. 60 off 24 now. Sixty off 24. And with the brand of cricket these days the batsmen play, they are confident or to chase down anything 15 in an over. Struck on the pad. And the idea from the bowler is simple. Cram the batsman for room. Not giving any width to the batsman to free his arms. They know anything within his reach will be dispatched. Excellent delivery into the block hole. But how well has he timed it? How did he manage to take it to the extra cover? Now this is some serious batting from Danny. Though he will get only a couple of runs. Full toss ball. But he miscues it completely. Probably hits the high of the bat. It's time for the birthday boy to join the party. He has to make this opportunity count. This is turning out to be a match deciding over from Nitesh. Goodness me, what a coincidence. It's a birthday boy up against a birthday boy. What a time to play a game. Nitesh and Foram both have their birthdays today, and one of them will have to be on the losing side. Good use of the wrist, but only to get a one. So no matter which team wins, but best wishes for both the birthday boys, to Nitesh and Foram. Big swing, leading edge, one bounce over the rope. It doesn't matter how it comes. Everything will count. And they will take it as well. 17 gone, 134 for 6. 52 required of 18 now. And with that over, it's a 10 run coming in that over, the last over. And last 3 overs remaining. And the captain has decided to take the ball in his hand. And what a beauty to start off the over. He's bowling as he has bowled a couple of overs before.
Change of a pace. Was looking to fox the batsman, rolling his finger on the ball. Way down the leg. Played it upishly. The fielder from the long on is in the business. And they are coming back for two. Well, it's the Danny who wanted to run back at the non-striker's end. Whereas the spectators of the game changers, they want him to take the strike. They want him to take the responsibility of scoring the bulk of runs. To take those couple of runs from the batsman, was it a good idea? Was that really needed? Out of these two batters, it's the Danny who is doing the damage. He's on 25 of 12. Nicely done on the onside, but can get only a single. And Raging Bulls, they are happy to give away those singles and doubles. Dancing down the track. And the bowler reading the mind of the batsman here. No timing whatsoever. Can only get a single. Will retain the strike. But what an over that was from the captain. Opponent needing 58 of 18 and the captain coming in to bowl the very first over, conceding only 5. That's some bowling effort. That's some cricket for you. 18 overs gone. 139 for 6. 47 of 12 balls. Vaibhav Parmar to bowl the 19th over. And Danny, he has pummels it over the mid-wicket region for a maximum. 41 of 11. Outside the off stump this time. He reaches out for that. Every dot balls are a gold dust in this last couple of overs. Fuller length delivery. Inside edge and straight to the fielder at fine leg. He is swinging his blade very hard. But kudos to the bowler. He's not bowling it into his strength. But this time, he needed no second invitation to send it into the crowd. Excellent connection. The fifth maximum for Danny here. He's on 38 of 19. And as we did mention, it doesn't matter which team wins. The equation matters. 35 of 7 now. The net run rate matters. Should be a wide. Yes, it is. Way outside the tram line.
Take that. That's 13 and over. It doesn't matter where you bowl. It doesn't matter what pace you are bowling. Danny the batsman only knows one way. It's his way of batting. What an inning he's playing for his team. 44 of just 20 balls. 28 required of 6 balls. Are we up for something miraculous here? "28 of 6 balls. Game changers. They need a Rinku Singh here. Rakesh, the captain from Raging Bulls, to full bowl the final over of the match. And the good thing for the Raging Bulls, it's Forum who is at the striker's end. And what a shot. What a shot from Forum. A full toss delivery, backs away, makes some room for himself and just timing it to the perfection, finding a boundary over the deep extra cover. 24 of 5 balls. This partnership have really changed the game for the game changers. And a dot ball. Danny, he is so desperate to come back at the striker's end. Having some word with his partner, probably telling him, just tap the ball, give the strike back to me. Forum goes up, but only to get an elevation, not the distance. 23 of 3. Wow. Wow. That's all you can say. It's a 50 for Danny. Danny, you can raise your bat. You have batted exceedingly well. 50 of just 21. Take that. Goodness me, this guy is some batter. This is power hitting at its very best. 11 of 1 ball. I told you. The game changes. They don't let the things go away without putting on a show. And a dot ball. It's a victory for Raging Bulls. They will stay at number 3 at the points table. They have won this match by 10 runs. But what an inning that was from Danny. Literally single-handedly pulled the things for his team. But the congratulations for Raging Bulls for getting another 2 crucial winning points. And a good fight, good show from the game changers.
All right, ladies and gentlemen, man of the moment with me, Devashish from Raging Bulls. First of all, the way you started, it was a slow start from your end, not the kind of batsman you are. You like to take on the ball right from the ball one. What was the message? What was going on in your mind? Especially something else, but the wicket was very slower and the bounce was uneven because the wicket was just wet. So I'm waiting to get some dry and coming afterwards. I was thinking that there was a one shorter side, so I will target that, and I get the confidence when the first second hits get it, and I knew I have to stay till the end. All right, at once you guys were batting exceedingly well. Were you guys feeling that you fell short by some runs? Because at once it looked like you would go beyond 200 runs mark. Yeah, but good batting with Rakesh also in the middle. So we are thinking that it will be might 200 plus, but unfortunately it does not happen. But we will try for next time. All right, they were a very, very well played and excellent day. You must be tired as you are looking behind the stumps. Uh, so that's all, ladies and gentlemen, from the post-match presentation from the match number 1 today. We'll be back with the live action from the match number 2 in shortly. Till then, it's a goodbye.
All right, then, welcome back to everyone from the live coverage of this match going on between Mavericks up against 110, where 110 won the toss and they have decided to field first. And after 3 overs, Mavericks, they are at 23 for 1. And it's a very important game for both the team. 110, Mauka, they have played 4 so far, have won only 1. And they would be desperately needing those 2 winning points. Whereas Mavericks, a victory for them. What a sight! Muzib, he was too hot to handle for the batsman. Pranav cannot do anything about that delivery. It was a peach of a delivery. Even the best of the batsmen couldn't have done much about it. The second wicket fall for Mavericks. First, it was Kshitij, who is the captain for Mavericks today. A brilliant batsman, gone back to the pavilion in form of run out. And now, Pranav, gone back with a beauty of a delivery. It's 23 for 2, 4th over in progress. And 110 Mauka. What a good toss to win for them. Mujib, he is spitting fire at the moment. Watch out that pace. Some noise there. Some noise there. Appeal is up. Some words exchanged. Now this match is heating up even more. Full toss delivery. And he has helped it on its way to the fine leg. Shot a boundary there. And after playing a shot, the batsman has a swag on his face. He's off the mark in some fashion. Off the mark with a boundary. Mujib, in an effort to bowl with an extra pace, was probably looking to bowl into the block hole. Ended up bowling a full toss delivery, a friendly one for the batsman. And gets a boundary. 27 for 2. Outside edge, and it flies over the fielder at third man. I beg your pardon, it was a slip, in fact, who was standing so far. 31 on the board for the Mavericks, and too many runs have come off the leading edge of the bat. So 110 Mauka. They have got a couple of wickets, but at the same time, they would be needing some luck in their favor. Into the block hole, into the block hole. And the batsman just got his bat on the time. Just blocking it. Played with no intention of taking run.
Last ball of the over, and Mujib is up against Himanshu. Banged in shot, and he goes for the shot as well. Pulled it on the onside. One bounce, two bounce, over the fence. Now this is some courage shown by the batsman. He was facing against the pacer and he's playing with no helmet. And the bowler banged in shot. He went for the pull shot. Well, as a cricket lover, cricket has to be played in a great spirit, and at the same time the batsman has to use the protective gears. If you are playing against a pacer, you should not take any risk. You should be wearing the helmets. So 4 overs gone. It's 35 for 2. Abhishek is the bowler. Will be bowling the 5th over and the first one for him. Struck on the pad, and the finger is in, is up. Oh yes, he has been given out. And after getting dismissed, the batsman was showing something to the umpire, probably telling him that I have got some part of the bat, but the umpire is adamant with his decision, and the batsman has to go back to the pavilion. Abhishek striking of the very first ball. The man with the golden arm at the moment, and it's the Pratham Shetty, the danger man from the Mavericks, gone back to hurt very cheaply in this inning. Scored only 7 of 8 balls, and Mavericks, they are in trouble here. It's 35 for 3 after 4.1. And as we did mention, Mavericks are in trouble. So to take them out of trouble, it's their main man, Siddharth, who has had a great run in this tournament so far with the bat and the ball as well. And straight away, he's off the mark with a boundary. Slashes hard through the point. Siddharth Barot. The best batsman from Mavericks is out in the middle. Full toss delivery, driven to mid-off. And he sprints hard. Got back home safely at the non-striker's end.
Down the leg, way down the leg, way down the leg. So Mavericks, though they have lost 3 wickets, but their run rate is good. Scoring at the moment 8.79. Lovely delivery. Full face of the bat from the batsman, straight to the mid-off. A brilliant toss to win for 110 here. The captain would be extremely happy with the performance of the bowlers. Getting 3 quick wickets of the opponents. 3 top-order batsmen sending back to pavilion within the 5 overs is a great achievement. Full toss ball. It was an in-dipping delivery to the right-hander. He was looking to play it on the onside, inside edge of the bat, and the ball goes to the fine leg region for a boundary. He's riding on some luck here. Himanshu Batra playing on 16 of 7. This is good captaincy, attacking captaincy from 110. They know the Mavericks, they have their best batter out in the middle, Siddharth. And if they have their best bowler into the attack, quicker delivery on the pads. Played it on the onside, mid-on is up. 4-fielder inside the circle, mid-on, square leg, a point and a cover. This is good batting from Siddharth. Playing it late, watching the ball till the very end, and closing the face of the bat on the onside. This is gonna be some battle. Top bowler against the top batsman. Shot. Excellent shot. Just stand and admire that shot as a cricket lover. Hand-eye coordination at its very best. Another quicker delivery. Batsman waits for it, stands tall against it, and cuts it hard. No fielder moved for that. What would be the reply from the bowler? It's a fuller length delivery. Driven down the ground through the cover. Only to get a 1. With that single, it's 50 for Mavericks. 50 in just 5.4 overs. Banged in short, but the line wasn't good. Outside the tram line, extension of arm from the umpire. It's not an easy task for the match officials to do this.
And these guys have been doing tremendous job. So kudos to both the umpires. They have been spot on with the decision and still doing it wonderfully. Lovely delivery. Himanshu, he is watchful against Muzib. In the previous over, Muzib bowled Himanshu. He got 12 runs off that over. It's time for Muzib now to let the ball talk. Last ball of this over. Everything is happening in this over. And that's within the spirit of the game though. Last ball of the 6th over and the 3rd over for Muzib. How would he gonna respond? Balls down the leg. And it does happen. Muzib looking a bit tired, but he's ready for the fight. He's still looking to get a wicket of the final ball of this over. There he goes. A slash. Ball is in the up. 3 fielders tried to get underneath it. None of them could reach there. And the ball falls into no man's land. 6 overs gone. 53 for 3. So after 6 is 53 for 3 and change in bowling attack. So the spinner has been introduced. Amit is the bowler. Tall, strong lad. A quicker delivery to the right hander, just covering the line of the ball and blocking it defensively. What a shot! Effortless. That's all you can say. Right in the slot of the batsman. And he clears the rope easily. "110, they will have to find a way to get rid of this guy, or else he will take the score far away." Lovely. This is sensible batting from Siddharth.
And as a batter, you need to understand, you have to know what is your strength, what are your reach when you are at the crease. And this guy is aware of everything. Great presence of mind from him. Just a shorter length of a delivery. Enough for the batsman to free his arm. Backs away, cuts it hard through the cover for the boundary. He's in a form of his life. And the deliveries like this is never gonna miss out on those. This time goes on the onside. Seven was gone, 65 for 3. 12 came in that over, the first over pulled by Amit. Jignesh Chawla, the left-hand bowler, bowling around the sticks to the right-hander. A fuller length delivery around the pads. And he has just played it down the ground on the onside to get a one. A loopy delivery to the right-hander, and he has swept it very nicely done. No fielder at the square leg region. This is turning out to be a good partnership for Mavericks. They have stitched 35 of just 19 balls together. Improvisation. Smart batting, clever batting from Himanshu. Playing to the field, playing to the dimension of the ground. "26 of just 12 balls, strike rate of 216. Off the back foot this time, straight to the point. In fact, right off the point. And they get a single. 10 already in this over. They are not letting the spinner settle. Came down the track. And he has deposited this into the crowd. So the strategy from the Mavericks is simple. Not let the spinners settle. This is excellent, excellent counter-attacking from both the batters. Dot ball to finish off the number 8. Over number 8. 81 for 3.
in the air, but falls into the no man's land. So Amit is bowling with some extra pace in this over. If we compare his first over that he bowled, so he's bowling with some run up as well. So he can bowl spin, he can bowl as a medium pacer. Is in the air, should be an easy take for Muzib. Oh, he has dropped it. Oh goodness me, I cannot believe this. He did everything to get close of the ball underneath it. He doesn't drop many. He's an electric wire on the field. It's so rare to see a catch drop from him. Just a tap to the point and they take a single. He has knocked him over. So the life given to him, he couldn't make the most of it. Goes back to the hut, but he played a brilliant hand. Himanshu Batra, 29 of just 16 balls. And Amit has struck in the second over for him. 85 for 4. तो एक रिक्वेस्ट है ग्राउंड में उपस्थित जितने भी लोग हैं, अगर आप सभी में से किसी की भी कार का नंबर MH02DJ3261 है तो आपसे रिक्वेस्ट है जहां पे भी आपने पार्क किया है वहां से आप कहीं और पार्क कर लीजिए। जरूरत है, वहां पर कुछ काम किया जा रहा है तो आपकी गाड़ी के नुकसान भी हो सकता है। मैं फिर से कार का नंबर दोहराना चाहूंगा, MH02DJ3261। ग्राउंड में उपस्थित जितने भी लोग हैं, अगर आप सभी में से किसी का भी ये कार है तो प्लीज कार की पार्किंग कहीं और कर लीजिए, कार को नुकसान भी हो सकता है। धन्यवाद। तो चलिए अब मैच की तरफ ध्यान देते हैं। 9 ओवर के बाद स्कोर है 85 रन, 85। बहुत ही बढ़िया ओवर था वो, अमित द्वारा फेंका गया वो ओवर। मात्र 4 रन आए उस ओवर से और कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत है यहाँ पर 110 को। और अब गेंदबाजी करने आए हैं पुनीत। राइट आर्म ऑफ स्पिनर और बढ़िया गेंद, लेकिन ये विकेट कीपिंग बेहतर हो सकती थी। देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय होता है। डीप में बढ़िया कार्य किया गया है तो प्रतीत हो रहा है कि 22 के रूप में रन मिले हैं। 4 रन जुड़ जाएंगे टीम के खाते में। जहां एक भी रन नहीं होने चाहिए थे वहां पर 4 रन मिल गए हैं। कदमों का इस्तेमाल किया है सिद्धार्थ ने, और जब भी इन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया है नतीजा वही जो इस गेंद पर हुआ। फ्लाइटेड गेंद उनके पाले में, वो ऐसे मौके नहीं चुकने वाले। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं।
और ये खराब क्षेत्र रक्षण। जी हाँ, जब इस मुकाबले में उतरने से पहले मुझे यकीन है दोनों ही टीम को पता होगा कि इस मुकाबले का इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है ये दोनों ही टीम के लिए। और इस प्रकार की क्षेत्र रक्षण ना सिर्फ गेंदबाज का बल्कि और भी जितने भी अन्य खिलाड़ी फील्ड पर फील्ड कर रहे हैं उनका मनोबल गिरा देती है। Down the track, over the bowler head, and he has pumped it, thumbs it over the bowler's head for another maximum. With that maximum, it's a half century for Siddharth. So his great run in TPL 2023 continues. He continues to shine. And he is not done yet. Opportunity, and Muzib takes it. Excellent running catch from him. A full toss delivery, a nothing delivery by the bowler. But all credit goes to the fielder. Running hard from the long on, keeping his eye on the ball till the very end. And a safe hand from Muzib sends a good batsman to the pavilion. As we did mention, Siddharth was undone. He is livid with himself. He knows that. He knows that he would have sent it out of the park other day. But unfortunately, he will have to go back to the pavilion. End of a brilliant knock. Courtesy a brilliant catch. So one can say Muzib, he redeemed himself after dropping that catch, forgetting what happened, and starting off on a fresh note. So half a side for Mavericks are gone to the pavilion. It's 105 for 5. Beautifully bowled. Dot ball to finish off the over. Though it was an expensive over from Puneet, but he would be happy. He has got a wicket, a big fish. 10 overs gone. It's 105 for 5. And it's time for a much needed drinks break. It's Anazol drinks break at TPL 2023.
तो चलिए 11वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अब गेंदबाजी का भार संभाला है गेंदबाज अभिषेक ने। 10 ओवर के खेल के बाद स्कोर बने हैं 105 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन टाइमिंग बढ़िया नहीं। मात्र 1 रन मिलेंगे बल्लेबाज चैतन्य को। बढ़िया टाइमिंग इस बार। गेंद और बल्ले का जैसे ही मिलाप हुआ, बहुत ही बढ़िया आवाज आई बल्ले से, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथ में। मात्र 1 रन से संतुष्ट। 1 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने अब अपने खाता खोल दिए है। कैच हो सकता था, बहुत ज्यादा दूर नहीं थी गेंदबाज के बाएं हाथ से। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, लीडिंग एज लगी थी बल्ले की। शानदार गेंदबाजी अभिषेक वारंग, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। 110 मौका की तरफ से बहुत ही किफायती गेंदबाज। नपीतुली लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है अब तक। बाहरी किनारा, गेंद थर्ड मैन और पॉइंट के बीच से जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, और इसे अंत समय काफी लेट खेला था बल्लेबाज कुणाल ने। यही एक कारण था कि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने आखिरी समय पर बल्ले का मुंह खोला और 4 रन बटोरे अपने लिए और अपनी टीम के लिए भी। उस बाउंड्री के बाद क्या जवाब था यहाँ पर अभिषेक के द्वारा। एक रिप्लाई जिसे हम कहते हैं, बहुत ही बढ़िया रिप्लाई किया सीधे जड़ में गेंद की। ना सिर्फ बल्लेबाज बल्कि विकेट कीपर भी चूक गए उस गेंद को पकड़ने से। 22 के रूप में मिलेंगे 1 रन। 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। तो 11 ओवर के बाद स्कोर है 113 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है मैवरिक्स के बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन विकेट एक चिंता की सबब बने रहेगी जरूर। अब बहुत ज्यादा विकेट हाथ में नहीं है, और 110 मौका भी यही चाहेगा कि यहां से जो मोमेंटम उन्होंने पाया उस मोमेंटम को खोने ना दें। बहुत ही खराब गेंद, और ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। नौ स्ट्राइकर एंड पर थे, और जैसे ही देखा विकेट कीपर चूक गए उस गेंद को पकड़ने के लिए, अपना छोर बदल लिया। 2 रन जुड़ गए हैं टीम के टोटल में। और यहां पर जी हाँ, अगर बॉल 2 बार बाउंस करता है बल्लेबाज के पॉपिंग क्रीज से पहले, तो वो वाइड गेंद नहीं, नो बॉल होनी चाहिए। और यही स्ट्राइकर्स एंड अंपायर भी कह रहे हैं। तो क्योंकि वो बॉल 2 बार बाउंस हुई थी पॉपिंग क्रीज के पहले, तो भले ही वो वाइड गेंद थी, लेकिन रूल के मुताबिक नो बॉल वाइड गेंद को ओवरटेक करता है।
So yes, as per the rule, ball bouncing twice before it reaches to the batsman has to be a no ball, and the no ball will stay. And not only the no ball, it's a free hit delivery to the batsman. Chaitanya, he has got the license. Can he take the full toll of that free hit delivery? Where he gonna go? Full toss delivery. He goes on the onside. Sweeps away and gets a boundary. Not a good free hit delivery to bowl. Though the 5 wickets have fallen, the runs are flowing. Jignesh Chawda, he's a good left arm spinner, but seems a bit off color today. Hasn't bowled to the reputation that he has. Floated delivery, and it should be a wide. Yes, it is way down the leg. And it's not a good line to bowl to the right-hander. You don't have a protection for the balls like this. Outside the off-stump, batsman happy to just cut it away on the offside to get a single. $120 already on the board. The run rate is excellent for Mavericks, 10.29. And if they keep playing at this run rate, they will end up scoring 206. But still, one would believe the momentum is with 110 here. And with this kind of deliveries, the pressure will be off from the batsman. These are some easy runs on offer for the batsman, and they are happy. This is the kind of delivery that he has to keep bowling at to the batsman. They need to show some consistency. Excellent delivery. And a young lad from the fine leg did well to limit the run only to 1. 12 gone, 122 for 5. Catch it is the shout, and this should have been taken. It will definitely go down as a drop catch. The fielder in the deep had all the time in the world to get underneath it, but he misjudged it completely. Puneet, he could have
had the second one under his name. Nevertheless, a boundary for the batsman Kunal. This one keeping a bit low. Bowling outside the reach of the batsman is the plan from the bowler. A friendly full toss delivery to the right hander, and he is happy to just tap it on the off side. ये बढ़िया लाइन और लेंथ है। कुछ इसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने की ज़रूरत भी है, लेकिन इस ओवर में हमने देखा है कि गेंदबाज कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने में अब तक असक्षम रहे हैं। बहुत ही खराब गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। महंगे गेंदबाज साबित हुए हैं अब तक। पुनीत अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। 27 रन अब तक आए हैं इनके स्पेल में। हालांकि इस ओवर में अब तक 7 रन और इस सिंगल के बाद 8 रन आए। तेरह ओवर का खेल हो चुका है पूरा। स्कोर है 130 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 10 रन प्रति ओवर ये है करंट रन रेट। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन हुई है। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है 110 के प्रमुख गेंदबाज प्रफुल्ल मिश्रा को। जरूरत है विकेट की और बढ़िया कप्तानी, बढ़िया सोच भी। बाहरी किनारा और थर्ड मैन के खिलाड़ी दानिश वहां पर मौजूद। मात्र 1 रन मिलेंगे। ऑलमोस्ट अगर ये गेंद स्टंप्स पर होती तो बल्लेबाज को जाना होता लौटकर पवेलियन। गेंद ने बिल्कुल भी उछाल प्राप्त नहीं की उस सतह से। भाग्यशाली रहे यहां पर बल्लेबाज। विकेट के तलाश में है यहां पर 110। ये पार्टनरशिप पनपती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। दोनों ही बल्लेबाज अपना समय ले रहे हैं। रन रेट तो बिल्कुल भी मसला नहीं होना चाहिए। बढ़िया रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है और कुछ और ओवर अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी हुई तो मैवरिक्स यकीनन अच्छे रन्स बोर्ड पे लगाने में कामयाब हो सकता है। और इसीलिए ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए आए हैं गेंदबाज। और के बढ़िया बल्लेबाजी। उस गेंद को लेट खेला, बैकफुट पे गए, रूम मिला था बल्लेबाज को। और क्योंकि थर्ड मैन काफी फाइन पॉइंट के खिलाड़ी के बाएं की तरफ से गई ये गेंद। बहुत ही तेज आउटफील्ड। 4 रन बटोर लिए हैं।
बल्लेबाज जानते हैं कि यहाँ पर साझेदारी की जरूरत है, तो रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे हैं। गेंद के मेरिट पर बल्लेबाजी होते हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। जैसे ही फुलर लेंथ की गेंद देखी, बल्लेबाज के मन में एक लालच सी आ गई थी, क्योंकि छोटी बाउंड्री है कवर के क्षेत्र में, यकीनन वो बाउंड्री बल्लेबाज के जहन में होगी, और ये वही एक कारण हो सकता है कि उस शॉट को खेलने का प्रयास किया गया बल्लेबाज द्वारा। पैड पे जाकर टकराई जरूर है, अपील की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं अंपायर से। तो अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया स्कोरर की तरफ से, तो यकीनन बल्ले का कोई भाग जरूर लगा होगा गेंद से। सिंगल आते हुए 14वें ओवर के आखिरी गेंद में स्कोर है 136 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पुनीत का तीसरा ओवर, फुल टॉस की ये गेंद भाग्यशाली रहेगी, मात्र एक ही रन मिले उस गेंद पर। एक और फुल टॉस की ये गेंद, और जैसे उस शॉट को खेला, बल्लेबाज ने अंपायर की तरफ देखा और नो बॉल का इशारा। वेस्ट हाइड के ऊपर फेंकी गई ये गेंद एक बीमर गेंद थी, तो उस गेंद पर बाउंड्री भी बटोरे और अगली गेंद फ्री हिट भी होगी। फ्री हिट की गेंद, और उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। डॉट गेंद, बढ़िया गेंद यहाँ पर, बढ़िया कमबैक वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज पुनीत। एक और फुल टॉस, एक बार फिर गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में जाती हुई, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हो रही है गेंदबाजी पुनीत द्वारा। इक्के दुक्के अच्छे गेंद जरूर फेंके जा रहे हैं उनके बाद, लेकिन जो भी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है दूसरे छोर से, प्रेशर हट जा रहा है। ये ओवर एक महंगा ओवर साबित होता हुआ, अभी भी 3 गेंदें बाकी इस ओवर से। देखना होगा कैच पकड़े जाएंगे या नहीं, जी नहीं। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के कुछ ही गज दूर गेंद टप्पा गिरी। सवाल पूछे जा रहे हैं अंपायर से कि ये 4 रन है या नहीं, तो जी नहीं, वो बाउंड्री नहीं, 2 रन है।
ये बढ़िया विकेट कीपिंग। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कुणाल द्वारा। क्रीज छोड़ चुके थे और जब तक वापस क्रीज पे लौटते तब तक गिल्लियां बिखेर दी गई थी विकेट कीपर द्वारा। पुनीत को दूसरा सफलता प्राप्त होते हुए छठे विकेट का पतन। साझेदारी तोड़ते हुए यहाँ पर 149 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर का खेल हो चुका है पूरा।
तो 16 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। स्कोर 156 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 4 ओवर बाकी है और अगर 4 ओवर में अभी भी कुछ 30 से 40 रन भी बन जाएंगे तो मैवरिक्स बढ़िया टोटल लगा पोस्ट कर सकता है बोर्ड पर। यहीं पर वो 110 भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं 180 के अंदर ही रोक पाए मैवरिक्स को, तो एक जीत होगी उनके लिए। एक मुश्किल कार्य लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं। तो एकमात्र विकल्प बचता है 110 के लिए, एकमात्र जो चॉइस है मैवरिक्स को रोकने का वो है विकेट्स। 3 विकेट बाकी हैं और जल्द से जल्द चाहेगा 110 की 3 विकेट झटके जाएं। नहीं तो अगर 20 ओवर पूरा खेल लिए मैवरिक्स तो यकीनन एक बड़े लक्ष्य का पीछा करना होगा 110 को। सत्रह ओवर के बाद स्कोर है 158 रन 7 विकेट के नुकसान पर। चैतन्य अभी भी क्रीज पर मौजूद 16 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 20 गेंदों का सामना करके। और कहीं ना कहीं अब वो चाहेंगे कि इन आखिरी 3 ओवर्स में अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा सा इंप्रूव करे, थोड़े बढ़िया स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करें। अंदरूनी किनारा, बाल बाल बचे। कल्पेश पाटिल हैं बल्लेबाज। अली काजिम है गेंदबाज और दिशाहीन गेंदबाजी। अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी किए हैं। अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, मात्र 7 रन दिए हैं, एक सफलता प्राप्त किए हैं और चाहेंगे कि विकेट कॉलम के अंदर जो नंबर है उसको बढ़ाया जाए। बाहर अंदरूनी किनारा और सीधे फाइनल के खिलाड़ी के हाथ में। जिग्नेश वहां पर मौजूद जरूर थे, मिसफील हुई उनके द्वारा। आज इनका दिन ठीक नहीं लग रहा। तारीफ करनी होगी मैवरिक्स के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों की भी। 100 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद बढ़िया साझेदारी करते हुए एक समय ऐसा लग रहा था कि 150-160 रन के अंदर ऑल आउट भी हो सकते हैं, लेकिन वो साझेदारी 5वें विकेट के बाद बहुत ही बढ़िया साझेदारी मैवरिक्स के लिए साबित होता हुआ। और अब ये यकीनन 190 का आंकड़ा छूना चाहेंगे।
चैतन्य और कल्पेश की साझेदारी 13 गेंदों का सामना करके महज 8 रन बनाए हैं और बढ़िया वापसी दिलाई है यहाँ पर 110 के गेंदबाजों ने। बहुत ही बढ़िया पिकअप शॉट खेल दिया है इसे। एक समय जरूर लगा कि वहां पर कैच लिया जाएगा खिलाड़ी द्वारा, लेकिन अंत समय पर गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए बढ़िया शॉट चैतन्य द्वारा। ऊंचे काठी के खिलाड़ी हैं, पटकी हुई गेंद थी और बहुत ही बढ़िया पोजीशन में थे उस पुल शॉट को खेलने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान चैतन्य के बल्ले से डाउन द ऑर्डर मिलता हुआ उनके टीम के। डॉट गेंद के साथ करेंगे ओवर की समाप्ति। 18 ओवर के बाद स्कोर 168 रन 7 विकेट के नुकसान पर। Twelve balls to be bowled. Jignesh is the bowler bowling the 19th over for the team and the last one for him. Though he has looked a bit off color today, but still he hasn't conceded many. Bowling his last over, 26 have been scored against his bowling, which is not at all a big number. Two dot balls on the trot. This is good bowling. Could have been 3 in the row. It must have come off the bat. Yes, it is. Nothing from the umpire. That means some part of the bat there. A single taken. Strike given back to the batsman Kunal. Beg your pardon, Chaitanya. They get 1. They were looking for 2, but there wasn't a second run on offer. Lovely loopy delivery. He has driven it through the cover. 1 run taken, 2 taken. A run out opportunity missed at the non-striker's end. Swept it on the onside. But he didn't get hold of it completely. 19 gone. It's 172 for 7. उन्नीस ओवर 172 रन 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर लेकर आए हैं प्रफुल्ल मिश्रा। इनका कोशिश करेंगे कि 180 के अंदर रोका जाए और वहीं पर बल्लेबाज की कोशिश होनी चाहिए कि 185 के आसपास या उसके ऊपर रन बनाया जाए। पांच गेंदे बाकी आखिरी ओवर की। कल्पेश पाटिल है स्ट्राइक पर। अभी भी इनके बल्ले से एक भी बाउंड्री नहीं आया है।
तेज गति की गेंद सीधे पैड पे जाकर गई, टकराई। कलाइयों के सारे इसे मोड़ना जरूर चाहते थे, लेकिन गति से मात खाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। बढ़िया आवाज जरूर आई थी बल्ले से, लेकिन फुल टॉस की गेंद को भी सीधे खिलाड़ी के हाथ में खेला था। 1 रन से संतुष्ट होना होगा। महज 3 रन आए हैं इस ओवर से अब तक, और 1 रन और जुड़ जाएंगे। जी हाँ, सीधे इसे बैक टू द बॉलर खेला था और मारते ही दौड़ चुके थे नॉन स्ट्राइक का जैन पर। अगर गेंद को पिक कर लिया जाता और स्टंप्स में लगा दिया जाता तो यकीनन बल्लेबाज को लौट कर जाना होता पवेलियन, लेकिन वो सुरक्षित। रन कंप्लीट हो चुका है, रन जुड़ चुके हैं टीम के खाते में। 176 रन लगे हैं आखिरी गेंद इस पारी की। देखना होगा क्या होगा, विकेट, बाउंड्री या मैक्सिमम। अंदरूनी किनारा और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। भाग्यशाली बल्लेबाज और दुर्भाग्यशाली गेंदबाज। तो वो उस 4 रन के साथ टीम का स्कोर होता हुआ 180 रन, 7 विकेट के नुकसान पर 181 रन का लक्ष्य करने उतरेगी 110 कुछ ही क्षणों में।
All right, then to chase down 181, we have the two openers from 110, Sajjad and Ramiz. And very first over bowled by Kalpesh Patil, very economical, conceding only 4. Now this is gonna be some chase. They will need some good batting skills here to chase this down. Mavericks, they have some good bowlers in their bowling lineup. To bowl the second over with the new ball, it's Aniket More. And the very first delivery, batsman was looking to take him on straight away. Lack of bounce can be seen. And that's the unevenness of this wicket. Lovely delivery. The way it carried to the keeper, it must have given some good confidence to the bowler. The openers from 110, they have a big role to play here to chase down a total of 181. You need a solid start up front. Play and a miss. Once again, a flash of a bat from the batsman. Hitting the deck at the moment, Aniket More. Lovely delivery. This one came in. It's so good to see a tall, lanky guy running hard, steaming in, using the shoulder and hitting the deck hard, not letting the batsman score runs easily off him. They are appealing for everything here. Probably an excitement more than a confidence. It's good to see the bowler has a backing of every fielders. Mistimed it. A short arm jab. Even a mistime will get him a boundary. Better fielding effort required by the fielder at mid wicket. It's a boundary for Sajjad and for 110 as well. 2 overs gone. It's 8 for none. Change in bowling attack. Hussain is the new bowler.
talking about Hussain, he's a smart, clever bowler. Where he sees space persistently. Lovely delivery. Stuck on the pad. Batsman was looking to just glance it on the onside. Will get a single in form of leg by Ramiz. He is struggling at the moment. Might have pulled up a cramp there. Well, he's good to go. Thumbs up from him. Good news for 110. Powerfully struck. And the misfield by the fielder at long off. The ball goes through his legs. Misfield is the one thing where all the teams have to work hard. Throughout this tournament, we have seen so many fielders dropping the catches and letting the ball go through their legs. And one can hope and believe that as we progress to the knockout stages, everyone will be on their toes. The effort that they put before coming the match. This is the second time the same fielder, the same region, and the ball goes to the fence. Even in the previous over, there was one shot played by the batsman. He targeted the short mid-wicket region, and the fielder lets it go between his legs, and the same thing happened. And every time we have mentioned that being a sports person, you have to learn from your own mistake. You are not bound to repeat the mistake. It was a second boundary for Ramiz. Third over is going on, 18 for none. There and 110 Mauka. Both the openers, they need to make sure that they bat together at least for 5 to 6 overs. Hussain bowling his first over and the third over for the team. 10 runs have been scored in this over so far. 2 balls to be bowled. Off the back foot. Flat batted. Just a slap, in fact. And Ramesh, he has he slipped or what? It looked like he just stumbled. As a cricket lover, as a TPL fan,
We expect, we hope that everything is okay with Ramiz. He should be able to stand up again and ready to resume his inning. 3 overs gone. It's 19 for none. And this is not a good sign. This is not good to see. Ramiz is walking off. This could be a big blow for 110. He was batting beautifully. We pray and we hope that he recover from that injury soon and come out to bat the later part of the inning. To replace him, we have Danish walking in at the number 3 for 110, 19 for none after 3. मैवरिक से निवेदन है, प्लीज समय का ध्यान रखें. Umpires, please note down the time. 90 मिनट का समय है अपने पास. 90 मिनट में इनिंग्स कंप्लीट होनी चाहिए. और जब बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुका है तो आपको ध्यान देखना होगा कि फील्ड सेट हो और बल्लेबाज दोनों ही अपने क्रीज पर रेडी रहें. तो रमीज के पवेलियन जाने के बाद एज अ रिटायर्ड नॉट आउट बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने आए हैं दानिश नंबर 3 पर. उनके साथ ही सज्जाद अभी भी क्रीज पर मौजूद नॉन स्ट्राइकर एंड पर, जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं व्यक्तिगत स्कोर 6 रन पर. 10 गेंदों का सामना किया है उन्होंने. बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आते हुए और बल्लेबाज ने इंतजार किया, उस गेंद को अपने करीब आने दिया और अंत समय पर मात्र बल्ले का मुख खोल के पॉइंट के क्षेत्र में खेल के 1 रन ले लिया है. 1 रन के साथ अपना खाता भी खोलते हुए यहाँ पर बल्लेबाज दानिश.
बाहरी किनारा और पॉइंट के खिलाड़ी के बाएं तरफ से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और ये विकेट, बहुत ही शानदार गेंद कल्पेश पाटिल द्वारा। अंदर की तरफ आई गेंद और बल्ले के जो गैप था, उस गैप में से गेंद सीधे किल्लियों पे जाकर टकराई। सज्जाद आउट होने वाले बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने आए थे बतौर बल्लेबाज, बतौर ओपनर, लेकिन जिस प्रकार की बल्लेबाजी की अपेक्षा की गई थी उनसे, उस अपेक्षा पे खरे नहीं उतरे आज। अपने पहले ही गेंद का सामना करते हुए सादिक बाहरी किनारा जाकर सीमा रेखा के बाहर चली गई है। थर्ड मैन के खिलाड़ी वहां पर थोड़ा बेहतर एफर्ट की अपेक्षा थी उनसे। कुणाल सोनी, आज इनका दिन अच्छा नहीं जा रहा है फील्ड में। चार ओवर के बाद स्कोर है 28 रन, एक विकेट के नुकसान पर।
So this is good captaincy from the Mavericks. Good field placement. They have a third man, backward point, a point. So kudos to Mavericks bowler. They have made the life difficult for the 110 batters at the moment. Fifth over going on. And the score is 30 for 1. Excellent shot from Danish. Standing tall and playing on top of the bounce. This time on the onside. Bigger boundary there. Fielder runs in, charges in, and restricted the batsman only to 1. 5 overs gone. It's 36 for 1.
7 was gone, 43 for 2. And now to bowl the 8th over, it's Atharva. And he doesn't waste any time striking. This guy is some baller. He is sitting at the number 2 amongst the best bowler of the tournament. Forty-four for 3. Abhishek is the new batter in the middle and he's off the mark with a single straight away. The required rate is almost 11 in an over now. 137 required of 75 balls. Things are getting out of hand for 110. It's time for the batters to take up the responsibility. Put up a good partnership. They need to bat for some time in the deep, in the middle, and have to make sure that they keep playing with a good run rate. Excellent effort from the fielder at square leg. And this is excellent captaincy from Kshitij from Mavericks today. Setting an attacking field, he knows that they have already got 3 batsmen of the opponent team. They would be eyeing to get a couple of wickets more from here on. They don't want to give opponent to any chance to come back. It was gone 45 for 3. Another change in bowling. It's Siddharth, the all-rounder. So he was excellent in one department, time to shine in another. Outside edge of the bat. A third man. Oh, that did rise a bit more than the batsman's expectation. This surface is really difficult for the new batters. There he goes again.
Bowling away from the right-hander. He's not bowling to the strength of the batsman. Batsman had to fetch for that. Siddharth is a very smart cricketer. Beat bat or beat ball. He's playing a mind game here with the batter. Once again, outside the reach of the batsman and the fielder at short cover has dropped a catch. It wasn't that difficult by any means. Should have been taken. Nevertheless, a life for the batsman, Abhishek. Getting behind the line of the ball and playing it back to the bowler. 9 overs gone, 47 for 3. Run rate is well below 6. And when you are chasing a big total like this, you really need to think about it. It's time for one of the batsmen to take chance to take the bowler on, or else the required rate, the asking rate will keep mounting up, which is 12.18 at the moment. Abhishek and Sadiq, they both need to find a way to score boundaries in every over. A half-tracker delivery. Batsman could have played it any part of this ground. Inside edge. Abhishek Warang, he is a potential batsman, but today at the moment he has had a shaky start, struggling to find the sweet spot of the bat. A shorter length of a delivery outside the off stump, way outside the off stump. So length of the bowler in this over so far on a shorter side. Wants the batsman to play off the back foot. And when you want to play the shot off the back foot, you need to be technically sound. The transfer of the weight has to be on your back leg. And at the same time, your hand-eye coordination have to be spot on. A lot of things depend how well you bat. They are appealing. They are appealing for a caught behind. The batsman Sadiq, he's having a fun out in the middle. Just a poke and a miss. Run rate of 5.07 at the moment. Fuller length delivery on the pads.
And he has just glanced it away to the fine leg region for a boundary. Not a good line to bowl when you don't have a fine leg fielder there. This time he has got it from the meat of the bat, but finds the fielder at cover. Dot ball to finish off the over number 10. And score is 53 for 3. Time for an Azal drinks break. So the play resumes after a much needed drinks break. Change in an end as well. Bowler is ready to bowl from the media end. 10 overs remaining, 128 require. Hussain to start off the 11th over. And umpires have to make sure that the last 10 overs remaining and they have to be completed within 45 minutes. So 4:45 is the time that you have. Within that time slot, we have to finish off this inning. A half-tracker delivery, a nothing delivery to the batsman, and they're happy with one.
Should have been an easy couple of runs there. But could be the batsman he thought of getting a boundary the moment he had struck it. Change in a pace. But the batsman spotted that very early, covering the line of delivery and going it up and over extra cover. An excellent looking shot. So finally Sadiq, he breaks the shackle. But they need to continue playing the shots. This time off the back foot, and Hussain in his own follow through drops it. Though it was traveling quickly to him, but being a medium pacer, he was ready to pouch it. Required rate is really mounting up here for 110, 13.18 at the moment. And that's a wicket. So the life given to him. He dragged on and gone back to pavilion. Fourth wicket down for 110, and they are in all sort of trouble at the moment. So finally, hello. Finally, a wicket under the wickets column for Hussain. New batsman Shabir Ali. 110. They still have Muzib to bat. Fuller length delivery, and batsman plays it with a soft hand to the point, gets a single and gets off the mark. 11 gone. It's 59 for 4. Firmly struck by the batsman off the back foot, but only to get one. Aniket was there at long on. Chaitanya bowling his second over. And all the bowlers from the Mavericks have been so economical. A loose delivery, room on offer for the batsman, and he slashes hard. Fielder from extra cover did well to get closer to the ball.
but he will have to fetch the ball from the boundary ropes. $13.50 is the asking rate at the moment. 117 required of 52 balls. $110 Mauka. They need to start firework, not from the one end, from both the end, in fact, to take their team home. It's a very important game for them. It goes aerial this time. Long off in the business. Siddharth is there. Some football skills shown by the fielder. Siddharth saves a couple of crucial runs for the team. This time in his arc, and Siddharth with his big and safe hands takes it in a reverse cup style. It was traveling though, but he was standing like a tall wall. Very well done by him. And Abhishek Warang, his struggle has come to an end. $66 for 5. And the batter walking in should be the guy for 110. Mujib Bag, the hard-hitting batter from 110. $115 of 50 balls. A big challenge ahead of these two batter. And Chaitanya, bang on the money, attacking the stump, bowling a fuller length delivery to the new batter. And he just came forward, defending it back to the bowler for no run. Almost. The other day, it would have nicked to the keeper, but he survives. Trailer was gone. 66 for 5. So far, 7 bowlers have been used by Mavericks. So the rotation of the bowlers have been spot on from the captain. Kshitij is the captain today for Mavericks. And all the bowlers, in fact, have got a success. Except a couple of bowlers, Aniket and Siddharth, the only bowlers who doesn't have a wicket under their name. But they all have been economical. Atharva is back into the attack, and he has been welcomed, and he has been treated with a maximum. What a shot from Shabir.
on his knees, and the connection was sweet. Atharva, who has got 15 wickets so far in the TPL, sitting at number 2 at the wicket takers list. He is just behind the number 1, Harpreet Bright from the Black Knights. So the spinners, they all have had a great run in TPL 2023. Most of them have got some good numbers when it comes to the wicket. A quicker delivery. Though there was a bat, but the fielding team, they believe that it has hit the pad first and then the bat. That's why that appeal was for. Talking about Atharva, he has a very simple but very effective action. Uses his wrist to get the spin. There he goes. And with that single, Mujib is off the mark. So we were talking about the bowling analysis of Atharva. The key in his bowling is his length. He doesn't bowl on a single length, and the variation that he has shown is remarkable. This one was bowled quicker. Batsman came forward, though his intention was to play through the cover, thick outside edge of the bat, and the ball goes into the gap between third man and point. Will get a boundary. 13 gone. It's 78 for 5. 103 required of 42 balls. Another change in bowling attack, and it's the pacer Aniket More has been handed over the ball. So another good captaincy move from the Kshitij. As soon as he sees the best batsman from the opponent team is out in the middle, he has their prime bowler into the attack. A quicker delivery, a bit leg side-ish. This is excellent cricket from Muzi, putting the pressure on the fielder straight away, and that allows them to get a couple of runs. Lovely delivery. Aniket More, a brilliant bowler. Excellent placement. Minimum effort, maximum result. Using the pace of the bowler, this time Mujib targeting the shorter boundary. 97 of 39. If anyone from the 110
can pull the things off, it has to be him. Good comeback delivery from Aniket. So the battle is still going on. If the previous delivery, it was the batsman who has an upper hand. The very next delivery, the bowler has responded in some good style. Another dot ball. Two dot balls after a boundary. Last ball of the over. Almost got his man. What a comeback by Aniket More here. After getting struck a boundary, he came back with the three dot balls. 14 gone, 84 for 5. Only 6 runs came in that over. Once again, a brilliant move from Mavericks. The captain from Mavericks, they don't want the opponent to come back. Wide is the signal. So they have their best bowlers into the attack. If the previous one, Aniket More, this time it's Siddharth. Bowling is second over. Though he's an off spinner, but he doesn't really turn the ball. You will hardly see a sharp turn from him. Excellent shot, but only to get one, and a misfield in the deep will get him a boundary. A sloppy in the field, and he apologized to the fielder, to the bowler, in fact, straight away. A second boundary for Mujib there. They need a raining boundaries here. 110. Once again was looking to play off the back foot. Maybe a premeditated shot. It wasn't that shot to play off the back foot. A full toss delivery, and it has been punished over the fence for a maximum. After playing that shot, Mujib, he is pumped up a bit. Lovely comeback.
shortening his length, and this one came in quickly to the right-hander, and Muzib did well to play it along the carpet to the long on to get one. A solid forward defense, straight to the point. No run taken, 15 gone, 97 for 5. Last 5 overs to be bowled from Chhatrapati Shivaji Maharaj, and 110. They require 84 of 30 balls. Loud shout from Aniket More. He cannot believe that umpire has denied his appeal. So I beg a pardon for saying that there will be a change of an end after 5 overs. So in this match, we have a change of an end after 10 overs. Excellent cricket. Just hear that noise. Just that. Hello. Everyone from Mavericks clapping for that effort. He goes on the onside. Long on in the business. Kshitij moving to his right, filling it, returning ball back to the bowler. Single taken. And single will not help at all for 110. They need to start playing the big shot. They need some big overs. Off the back foot. Excellent placement. Gets a boundary. With the help of boundaries, 100 up for 110. 1-0-3-4-5. A rare loose delivery from Aniket. Lot of width on offer on that delivery. And Muzib, he's too good a batsman to miss out on those. Brilliant bowling in fact. So 78 of 25 balls. Two of these batters, be it Shabir or be it Muzib, they both have to play the life, an inning of life for them. A shorter delivery. And it has been dispatched over the cow corner region for a maximum. And he is pumped up again. It was a good over for the 110. 12 came in that over. 72 required of 24 balls now.
आखिरी 17 मिनट बाकी इस पारी के। अंपायर प्लीज ध्यान दे, 17 मिनट में 4 ओवर्स कंप्लीट करने हैं। अथर्व आए हैं गेंदबाजी करने और बहुत ही बढ़िया संपर्क, गेंद और बल्ले का बढ़िया प्रयास वहां पर सोहम द्वारा, लेकिन वो प्रयास नाकामयाब, कोशिश उनके द्वारा। 4 रन मिल जाएंगे। एक बार फिर बैकफुट पे जाके इसे खेल दिया है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी सोहम एक बार फिर थोड़े बिजी नजर आ रहे हैं। पिछली गेंद बाएं तरफ मेहनत की थी, इस बार दाएं तरफ तेजी से दौड़कर गेंद को रोका। 5 रन आ चुके हैं 2 गेंदों में, 4 गेंदें बाकी है। रिक्वायर्ड रेट जो है ऑलमोस्ट 19 रन प्रति ओवर बनाने होंगे यहाँ पर इस मुकाबले को जीतने के लिए 110 को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अथर्व जानते हैं कि बल्लेबाज चांस लेंगे उनके खिलाफ, और स्पिनर को देखकर बल्लेबाज की आंखें बड़ी हो जाती है, लालच सी आ जाती है। ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास, कोई भी संपर्क नहीं, और ये सुरक्षित एक रक्षात्मक तरीके से इस खेला गया इस शॉट, एक ऐसे समय जब आपको बड़ी शॉट खेलने की जरूरत है। एक डिफेंस आश्चर्यचकित करता है। गेंद सीधे बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं थी, लेकिन फिर भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहां पर मुजीब भरपूर ताकत झोंक दिया था उस शॉट के पीछे, और यही एक कारण कि गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 6 रन के लिए। एक्स्ट्रा रन चाहिए 19 गेंदों में, आखिरी गेंद बाकी, और आखिरी गेंद में भी अब एक सिक्सर चाहिए होगा। और ये लगा एक और मैक्सिमम, ये उससे भी लंबी, उससे भी बड़ी, उससे भी ज्यादा दर्शनीय। सत्रह रन आते हुए उस ओवर में, 55 रन चाहिए 18 गेंदों में। $55 required of 18 balls. Hussain has come to attack. A swing and a miss from Hussain, from the batsman Shabbir, in fact. And right away, Muzib having a word with his partner. What is he gonna do? Is he gonna take on the bowler, or is he gonna give the strike back to the batsman?
Well, he continues swinging the bat. And Hussain continues to bowl a dot balls. Every single dot ball will mount up the pressure on 110. And they knows it. Make it 3 in a row. In the previous over, we have seen the batsman toying with the bowler. In this over, Hussain is playing with the mind of the batsman. Played it upishly, but only to get a single. Atharva was there at long on. A single of 4 balls. 2 balls remaining. What Mujib does he have? What does he have in store? Well, it shuffles across and gets a boundary. Only boundary. 50, 50 runs required of 13 balls. Once again, shuffling across. And he has clubbed it over the bowler's head for a maximum. This is unbelievable batting from Mujib. 50 for him of just 23 balls, 4 boundaries, 5 maximum. But he would believe his job is not done yet. He is not finished yet. 44 required of 12 balls. Kalpesh Patil is into the attack. Kalpesh to bowl the most crucial over of the match. Struck on the pad. Gets a single. Gets the big man on the strike. Down the leg, way down the leg. Excellent wicket keeping from the wicket keeper. Moving to his left quickly. 52 of 11 balls. It's hard to tell who is under the pressure. Is it a bowler or is it a batsman? Brilliant delivery. And why are they even looking for a single there?
Came down the track. Oh, goodness me. This guy can hit a long. It could be the longest one he has hit so far. He makes them look so easy. "36 of 9 balls. He is batting like a lone warrior here. Now one can see the pressure on the bowler. He goes again. Even bigger. Oh boy, this guy is some batsman. He's batting like as if someone is watching a highlight. 30 of 8 balls. With that maximum, it's 150 here for 110. Out of nowhere. I'm telling you, out of nowhere. They have made a match out of this game. At once, they were not even close. And that's a dot ball. It should be a sigh of a relief for the bowler. A dot ball is a gold. Last ball of the over. What is he going to do? Is he going to take a single and retain the strike? Or is he going to go downtown? 30 of 7. He has driven it down the ground. Sweeper cover in the position. Takes a single, retains the strike. 29 of 6 balls. And to bowl the last over of the match is the wristy off spinner, Atharva. "29 of 6. So in this match, two fielders have got the opportunity to be the hero of the match. It could be Atharva for Mavericks and Muzib for 110. Outside edge. They would definitely go for 2. And they will get 2. "27 of 5. Muzib. Can he be the Carlos Braithwaite for 110? Excellent delivery. Under the pressure. And Atharva right on the money into the block hole. Batsman somehow squeezes it out. Played it on the onside.
and they will not at all look to cross over. There he goes. Right from the meat of the bat. And he didn't even bother looking where the ball goes. It doesn't matter if 110 loses this. But this guy in the picture, Muzib, he has really won so many hearts today. He is taking a quality spinners to the cleaner. Quick hands, quick hands. The ball is traveling. Atharva holding his nerve, big time, big moment, and showing everyone, proving everyone why he is at number 2 amongst the wicket takers list. "21 off 2, make it 20 off 2. Only a miracle can win the game for 110. Or else it's just a mere formality that needs to be done in this match. Bottom end of the bat, bottom end of the bat. And it's Kshitij, the captain from the Mavericks. He has dropped a sitter, just palmed it over the ropes for a maximum. 14 off 1. Quicker delivery, and he has been given finally a revenge. A wicket for Atharva. And Muzib, he will go back to pavilion with a round of applause. 77 out of 33 balls. Even the Mavericks fielders, they are running and coming to him, congratulating him for his brilliant knock. And it's a much needed, a crucial win for Mavericks. They needed it desperately. So congratulations to them. And a hard luck for 110. They were so near, yet so far.
All right then, ladies and gentlemen, man of the moment with me, Siddharth from Mavericks. What a day he had. Excellent in all departments, in fact, be it fielding, batting, bowling. This wicket particularly, it's not that easy for batters who comes out, and it's not easy for the new batters to play the shot right from the ball one. But with you, the case is different. So we've played on this wicket before as well, so I knew what's going to come, and I was prepared for it. And luckily, things worked out for me today, and I'm very happy with the performance. I'm also very happy with the team's performance. It's a team's victory. I think so. Everybody played their part really well. Bowlers did really well. Batsmen also stood up, and they also scored. So we reached a score of 180 only because of the batting lineup that we had. So it's a team victory, and I'm really very happy. Thank you. Were you expecting that onslaught from the opponent, Muzib? It was one of the best you must have encountered in the recent times. No, no, absolutely. So we knew the team. We also had plans against Mujib, but eventually it didn't work out. So on the day, it's very important that you execute your plans correctly to win the game. I think so. It didn't work out against Mujib, but it did work out against 110. So that's the reason we won. So yeah. Talk us to something about your preparation. It's not easy if you are an all-rounder. You need to put some extra effort when you come out to practice in the nets. Honestly, I've not been on nets for a long time, so couldn't comment on that. But yeah, of course, if you're an all-rounder, there is a responsibility for you to bowl 2 overs, and those 2 overs can be very crucial. That can make and break the match for your team. So it's very important that you work on your skills and try to do best for the team. All right. Congratulations once again to you, and please continue your great run in TPL. Ladies and gentlemen, that's all from the postman presentation. And we will join you tomorrow at the same venue at 9:30. Till then, it's a goodbye.